looking very confident. It was a professional form of beach ki billi, as far as I know, because they were dodging and they were throwing to each other. What matters is they look pumped up, and that's what this team is all about. Yeah, even if you look at their squad, they've got more and more youngsters, and we all know T20 format is a mixture of youngsters and the seniors, but I think they've got the services of very good fast bowlers, and Mohammad Wasim, I think he's a manager of their team, and he's looking after the boys really well. Mohammad Wasim, not just the manager, he's also the head coach of the team, and this is the sign of a good academy who really wants to make a difference. Hats off to Ali Khan Tareen, who's been managing Tareen Academy. He's very passionate. He looks after the boys. Waqar Hussain ki team ka hissa hai. Mohammad Shahzad, Amir Azmar, Sharun Siraj is the captain. Shoaib Bilal, Nabi Gol, Imran Randhawa did really well in the last match. Aslam Khan, Sameen Gol, Ali Majid was the man of the match in the last match, and they also have Faisal Akram. And if we talk about AO Hospital, Khalid Latif is going to be opening the batting along. Zishan Malik is a very good batter. Zakir Malik is a really standout player. Lal Kumar is making his way in. Mohammad Akhtar, who batted really well. Sohail Khan, the wicket keeper. Mohammad Asad, the left arm spinner. Afnan Khan, Amir Barohi, Khuzaima bin Tahir, and Arif Khan. So on paper, these two sides are very strong. Even if you look at AO Hospital, they've got a very good wicket-keeper batter, Sohail Khan. I'm really waiting for him to come out and bat and perform for his side in this tournament. And Khalid Latif, as we all know, has played international cricket for Pakistan, and he's a very aggressive opener himself. The conditions in this ground haven't allowed teams to score really big on this ground. I'm really looking forward to a big score here that can pose a threat for Tareen Academy. That's when we'll find out exactly how good they are, Zishan. Yeah, we have already witnessed some low-scoring thrillers. Finally, I think we want a high-scoring game. A game full of runs, full of boundaries and maximums. And these two sides definitely have that on offer. There are some really good players in this tournament who are showcasing their talent, some really good teams, but a final between Umar Associates and Tareen Academy would be a dream come true for me. Yeah, even if you look at the way the teams have been distributed in the group stages, Tareen Academy being the strongest side in Pool B, Zishan Malik is going to be opening the batting tonight for AO Hospitals. And if you look at Group A, Umar Associates having so many star players in their lineup, I mean, they are definitely going to top that Pool A. And if you talk about his partner, Sohail Khan, tonight he has been promoted up the order. He's a very good batter, Sohail Khan. I've seen him bat in the previous tournament as well. He's an excellent wicket-keeper behind the stumps. And if he gets going, he can score runs freely at any corner of the ground. Sameen Gul will start the proceedings for Tareen Academy here. Pakistan is on a lookout for a decent wicketkeeper batsman right now, as far as I'm concerned, Zishan, because we just have Mohammad Rizwan playing for Pakistan. He is undoubtedly the best option we have at the moment, but we really do need to have a backup for Mohammad Rizwan as well. We just saw the one-day squad being announced. Mohammad Rizwan is the only wicketkeeper there. Yeah, apart from Mohammad Rizwan, Mohammad Haris is an option as well, but usually he's considered in T20 format of the game, and a bit of hot and cold with him. We talk about Mohammad Haris, but Rizwan is definitely the go-to wicketkeeper batter if you look at all formats of the game. Haris definitely has the potential, but he still has a long way to go to establish himself as a match-winning option. On the other hand, Sameen Gul is just that. He will bowl to Zishan. Starts off with an in-dipper, the ball just clipping the pads, and it's going to go around down towards fine leg for a leg by. Some serious swing there for Sameen Gul. He's known for that. Bowls at tight lengths and lines. Yeah, it was a loosener. He didn't charge up towards his bowling mark, still managed to get that movement in the air. Sameen Gul has also played HBL PSL for Peshawar Zalmi. So he has got so much experience, especially in T20 format of the game. He bowled really well in the previous game as well, Sameen Gul. Pick up shot. What timing, that occasion. One bounce into the fence. That's what I was talking about. Sohail Khan is a player to watch out for. Yep, Sameen Gul pitched it up, looking for a swing there, did not get it enough. And Sohail Khan pounced on it, played it over mid-off for a beautiful four. It was fuller in length, but the amount of movement that we saw in the first ball must have created some sort of doubt in Sohail Khan's mind, but he went with full flow
on that stroke and got a boundary of the very first ball. Once again, this time the ball curled back into the right-hander. He wanted to hit in that similar direction, but the ball going straight to mid-on. Sameen wouldn't mind this, Zishan, because Sohail is living dangerously, did not get in line of the ball there. It swung just at the last moment. He'll have to be a little cautious here, Sohail Khan, because Sameen has the ability of moving the ball in the air and off the pitch as well. He has a big gap there on the leg side. A fielder at deep square leg and a fielder at third man. Another pickup shot. Has that been taken? It has been taken, but the ball might have rushed the pads. That is a superb take behind the wickets. The ball kept going towards his left. It was a diving effort. Managed to hold on to it. Saved 4 runs for his team. Yeah, again we saw some movement. There was definitely a sound, but there was no bat involved, and an excellent take by the wicketkeeper behind the stumps. He must have been blinded a bit by the batter, but still he managed to dive away towards his left and get at the ball. Sameen still struggling to get his line right. He's getting a lot of swing. He's bringing it in if you look at his arm. Slightly shorter. Chance of a run out, maybe. Goodness me, that was so close. Sohail Khan would have been a goner if that ball would have hit the stumps. This is exactly what impresses me most about Tareen Academy. Each fielder ready to pounce on the ball. 4 fielders converging to back the ball up. You would see behind the wicketkeeper there, 3 fielders coming in to save a run there, giving no options to the batsman to go for an overthrow. Very impressive stuff from this young side. Young legs, Danish, they know the importance, they know the significance of fielding well in the shortest format of the game. Apart from creating run-out opportunities, you have to save runs in the field as well. Once again, an attempted pickup shot. Was there any inside edge? I think it was. Plus, it was always going down legs, Ishan. After 1, it's 6 for no loss. Once again, he was standing on the leg stump, tried giving himself some room. Although nothing big happened in the first over, I already have goosebumps right now, Zishan. I'm really looking forward to this match. It's going to be a good contest between both these teams. Yeah, I'm really looking forward to the start because Khalid Latif, although he's opener, but he has demoted himself down the order tonight, and Sohail Khan has been promoted up the order. So we might expect some fireworks from Sohail Khan and Zishan Malik. Zishan Malik tried scoring at a better rate in the previous game as well. He got a start, just couldn't take on from there. And as we anticipated, Ali Majid will be given the ball. How well did he bowl in the previous game? Ali Majid is a very dangerous campaigner. He bowls really well, uses his pace, varies it beautifully, gets his line right early on. Sohail will have to be careful and watch out for that quicker one which comes in. A full toss. Hit away on the leg side, wide enough, long gone. Will they come back for the second one as well? Yes, they do. I think that's the advantage of this tournament being televised. They must have seen how Ali Majid bowled in the previous game. He does not give any time whatsoever for the batter to settle. A bit of like Rashid Khan of Afghanistan, the way he bowls. That's the perfect comparison because they both have similar styles. Back live. If you see Ali Majid, he's not trying to turn the ball that much, just firing it in, making sure he gets his line and length right. Yeah, he bowls with a flatter trajectory. He doesn't give that much air to the ball. He tries to keep it as simple as possible. And as a batter, you need to make sure that you get your left leg away and play with a straighter bat. Lightly by the outside the off stump, and no chance of a single, especially when Hassan Khan is standing there at the off. The change of pace that I was talking about, Zishan. ये वाला थोड़ा सा खींच के किया था Ali Majid ने. There were so many good spinners in their lineup. They've got Ali Majid, they've got Hassan Khan.
Hitting it on the offside, straight to Hassan Khan. The aggression is still there from Sohail Khan. He's not going to back himself. He knows the competition is tough. But when the going gets tough, the tough gets going. This is serious competition between bat and ball. Nicely played down the ground. Good batting, really good batting this from Sohail. He knows he has an opportunity of proving himself tonight. He batted at number 7 last game, Sohail Khan. I wonder why he was demoted down the order. He's a top order batter. Especially when a wicketkeeper batter gets so much time to face the balls, you usually expect longer innings from him, just like the way Rizwan does. I hope he can play in the middle order as well. Left on the bat, that is close, the finger goes up. That's what we were talking about. You need to get your front leg away and you do not need to play on the back foot, especially when Ali Majid is bowling. And Zishan Malik has paid the price. It was fuller in line and look at the way he was right plumb in front of his stumps. Ali Majid, absolutely beautiful stuff. Bowled that one a touch quicker. Traps Zishan Malik in the crease, getting his man. After 2, it's 9 for 1. जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। इतना करीब आ जाओ कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों से बन जाएं, कोई दूरी ना रहे। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। We got a chance to witness him in the tournament Lahore Qalandars organized for their player development program. That's when we saw him first. He was very impressive then as well. Once again, kudos to Tareen Academy for spotting the talent which Lahore Qalandar developed, picking him up and giving him an opportunity to play for their academy. He's a serious talent, Ali Majid. I wonder why he wasn't selected for any of the franchises. Sakir Malik, I think, has now come into bat at number 3. That's how he got dismissed. Zishan Malik, he was playing down the wrong line on the back foot. He should have learned the way Sohail Khan was facing Ali Majid. With side-on stance, playing it with a straighter bat. Went for that big flashing drive outside the off stump. Just couldn't time the ball, Sohail. He was expecting that one to be a bit straighter. Seemed premeditated, cleared his front leg a bit too soon. Trying to play away from his body, but against Sameen Kul, that can turn out to be really dangerous. We have seen that so many times in this tournament that a opening pair looks to go after the bowling, they lose wicket early and then they go on the back foot. So it's important that they keep on with this momentum. They've got so much batting to come. Yes, you have lost a wicket early, but now Sohail Khan needs to go after the bowling, especially when he gets those batter deliveries. Must have been a slower bouncer attempted by Sameen Gul. Good change of pace, showing his experience there, Sameen. Sameen Gul is a really tricky bowler. He changes his length, changes his pace, makes it a nightmare for the batsman to score against him. And not just at this level, we've seen him do this at PSL as well. You can sense that Sohail is slightly on the back foot, especially after losing his opening partner in the previous over. Shorter in length, getting it inside edge, that is gone fine, and then it's going to go past the boundary ropes. Fortunate on that occasion, but he'll take it nevertheless, Sohail Khan. Undoubtedly, every run matters. A Chinese cut for Sohail Khan there, beating the keeper by inches. He went all out to grab that one, just went under him. I would love to see Sohail Khan rotating the strike. They seem like they're too preoccupied with scoring boundaries. You need to get the scoreboard ticking. Yeah, he likes the pace behind the ball, that is for sure. That is the reason why he has struck 2 boundaries so far, both
of Samin Gul. Driving straight over mid-off. Has that gone all the way for 6? No, one bounce into the fence. Almost carbon copy of what he did in the first over, Sohail Khan. This time much more convincing, getting much more bad onto it. This one was much more fuller, allowed the batsman to go at it and free his arms. The crowd loving this exuberance by Sohail. Once again playing it away from his body, but the hand-eye coordination was spot on there from Sohail. Still no changes in the field. Mid-over is still inside. What other options can Samin Gul go for? Goes for a slower one. Gently plays it towards the offside. He should have gone for a single. At least he could have attempted for a single there. That just adds to the pressure that the bowler is feeling. He's already gone for 8 in 5. A single there means he's gone for 9. No bowler likes that. Yeah, if Sohail would have taken a single, then Samin would have to rethink his strategy against a newer batter. Fast bowlers usually don't like being hit for a single. They prefer getting hit for a boundary so that they can plan a different strategy to a same batter. But these are the sort of things that the batters need to point. Went for that big heave. Not a good shot selection this. Zishan, when you've got so much talent, you've got to choose better strokes to play. Yeah, Sohail himself was not happy with that shot selection. It came back in after pitching, and it was much closer to the off stump as well. Samin Gul knew it. So did Sohail Khan. After 3, it's 17 for 1. Ali Majid being brought back for his second. He looks very dangerous. If he keeps taking wicket, I think he'd bowl him out. Bowl all 4 overs consecutive. Well, Danish, I haven't seen Zakir Khan bat much, but one thing is for sure, one thing what I've heard from other people, that he's a very aggressive batter. So it's going to be a very good competition between him and Ali. Ali so far is on top of his game. He has been picking up wickets regularly. He's making it difficult for the right-handers. But Zakir, although he got a golden duck in the previous game against Moment Seeds, but tonight obviously he'll be looking to score a few runs for his side. Catch it! In my opinion, Ali Majid is the perfect bowler to bowl at an aggressive batter because he traps you. He does not allow you to score freely. He does not give you that room. And if Zakir Malik does attempt to hit Ali Majid, it's going to be really dangerous for him. This is going to be a good battle. If he can manage to pull it off, if he can go after Ali successfully, not only it will create pressure on the bowler, but even the fielding side will be under pressure. Driven on the offside. Goes straight to Hassan. As we expected, he will definitely go after the bowler, but it all depends whether he can time the ball well enough. That was relatively fuller. Zakir cleared his front leg. Ali will be looking to pull his length back a bit and trap Zakir. Let's see him do that now. Yourself, buddy. Yourself. Once again, he was looking to give himself room. By moving away from the line of leg stump, he's taking the leg before out of the equation. Yes, but then he needs to be careful because Ali Majid can squeeze through if you allow him to. Yeah, because he's bowling with decent amount of pace here, Ali Majid, and he's not looking to turn the ball, that is for sure. Moving away from the line of off stump, pick up shot, square leg is out there. It's only going to be a single. How well was that fielder position out there on the leg side? Zakir does look kind of unorthodox, but as long as he gets the job done for his team, you wouldn't want anything else. What a brilliant spell this is turning out to be from Ali Majid yet again. It's going to be a wide. It has not been collected by the wicket keeper. That is going to go and touch the boundary ropes. So 5 extra runs, 5 bonus runs for AO Hospitals.
Right, with that 4, we'll move towards the sidelines. That hit the keeper, touched his gloves, he couldn't stop it. So over to you, Hina Didar. किसके साथ मौजूद हैं हम? जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक्टर नुमान हबीब. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. सबसे पहले तो बताइए कि आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं रमजान क्रिकेट को. रमजान क्रिकेट तो बचपन से एंजॉय करते आए हैं और स्पेशली ये जो डीएचएस स्पोर्ट्स क्लब मुल्क खान एकेडमी में ये टूर्नामेंट हुआ है, इसका ओपनिंग मैच हम लोगों ने खेला था, सेलिब्रिटी वर्सेस सेलिब्रिटीज. और ये हर साल होता है. बीच में 2 साल जो है कोविड की वजह से नहीं हो पाया था. और मोइन भाई की इसमें बड़ी मेहनत है, डीएचए की बड़ी मेहनत है. स्पेशली मुझे सबसे अच्छा जो लग रहा है मैचेज में आके, जो हमारे यंग जो स्लॉट है, जैसे कि आपने देखा होगा पीएसएल के अंदर कितने अच्छे लड़के आ गए, तो वो कैसे आते हैं वहाँ पर, सिलेक्शन कैसे होगी, बहुत सारे और लोग भी हैं. तो जब यहाँ पर देखने आए अंडर 19 के जो लड़के इतने अच्छा प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ से उनको सिलेक्शन का मौका मिलेगा. और यही लोग हैं जो अंदर अक्सर सिलेक्टर्स भी बैठे हुए, मैं बैठा हुआ था, तो यहीं से वो पिक हो सकते हैं, उनका करियर शुरू हो सकता है. और राइट, तो आपने सेलिब्रिटीज मैच का भी डिस्कस किया, तो आपका किस तरह एक्सपीरियंस रहा सेलिब्रिटी मैच में पार्टिसिपेट करने का? बेसिकली मैं और जो हमारा मैच हुआ था वो दोनों मेंबर्स से जिनका मैच हुआ था, और पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, फाद मुस्तफ़ा है, हुमायूं सईद है, फैसल कुरैशी है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो यहीं के मेंबर हैं. और हम लोग तो यहाँ मैचेस खेलते रहते हैं. ये तो हमारा होम ग्राउंड है और ये ग्राउंड बहुत ही कमाल है. और ये फैसिलिटी जो है, कहते हैं ना कि हम जब छोटे थे हमें नहीं मिली थी, हम लोग जो है सीमेंट पे खेलते रहे. लेकिन मुझे खुशी होती है कि आजकल यंग जनरेशन को ऐसी फैसिलिटी मिल रही है ताकि ये पाकिस्तान के अंदर आए, जल्दी आए और अपना नाम रोशन कर सकें. बाय द वे, मैचेस आप फॉलो कर रहे हैं, कौन से आपके प्लेयर कोई फेवरेट किसी को अगर मेंशन करना चाहते हैं, या ओवरऑल? देखिए, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं अपने दोस्त ही हैं, पाकिस्तानी नेशनल प्लेयर्स हैं. और मेरा कज़न जो है खुर्रम मंजूर भी इसमें खेल रहे हैं. और इसके अलावा जो वैसे तो टीम सारी अच्छी है, सबको मैं जो है अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरी जो फेवरेट टीम है वो नदीम भाई की है, उमर एसोसिएट. तो वो मेरे दोस्त भी हैं, इस वजह से ज़रा वो तो सॉफ्ट कॉर्नर होता है इसलिए. थैंक यू सो मच नुमान. सो दैट्स इट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. बहुत शुक्रिया आपका हिना दीदार. Meanwhile, Ali Majid got done with his second over. इमरान रंधावा को अब अटैक में लाया गया है. Another seasoned campaigner. Nicely guided towards short third man. Another single taken. That's what happens when you look for a quick single, cheeky single. The fielder has this tendency of misfielding and giving away an easy single then. But there's so much to learn when you watch this Tareen Academy players in the field. If you see, there was a misfield, but there was a fielder backing him up as well. That is the right thing to do. And Danish, these are the basics. And they matter a lot in the outcome of the game. No. Easy. Zakir Malik still looking to get those boundaries, and he's missing out on opportunities of rotating the strike here. Well, they were lucky enough that they see off that threat of Ali Majid in the previous over when he could not pick up another wicket, but obviously he still have 2 overs remaining. He'll be a threat to watch out for. माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्टर फॉर्मेट में, खास तौर पे आप अब एक तरह के माइंडसेट के साथ बैट नहीं कर सकते. यू गॉट टू लुक फॉर सिंगल्स एज वेल. यू कैन नॉट जस्ट लुक टू हिट. Over extra cover. That's more like it, Zakir Malik. The outfield might have been a little slow towards that side of the ground, so the ball didn't go past the boundary ropes. A couple in the end to the right-hander. That was a shot made by Zakir. It was a pretty decent delivery. It was in line. It was not too short, but he played it, forced the ball over the head of short cover, as you can see. Yeah, and he hit that shot towards the longest side of the ground. We have been mentioning it before. That region towards extra cover and deep mid wicket at the longest side. So if you have to collect a boundary there, you will have to make sure that you time the ball well enough and you have strength behind your shot. Shorter in length, pulled away, into the gap, into the fence as well. He picked the length there so early. He knew the previous one was a fuller length, so the bowler might be attempting a shorter length, so he was waiting onto the back foot. Although the square-leg fielder was there, but he still managed to hit it in front of square. What Zakir Malik showed in that shot was he's got great hand-eye coordination. He spotted the ball and hit it really well. He times the ball well. He's a natural timer. He looks like it. Just needs to focus on rotating strike. That will add value to his game overall. Well, so far they only are looking at 2 fielders outside the inner rings. That is why they are looking to get as many boundaries as possible. Now field change has been done.
Third man has been asked to come back in. Missed out. Ouch! That would have hurt. No matter what sort of padding you have, the ball always finds its way and hits you at the weak spot. Hit him inside his inner thigh. Have you ever been hit by a fast bowler, Zishan? A lot of times. It hurts. I still remember once I was looking to work that ball away on the leg side as well, and even I was wearing the gloves, but still the ball was able to damage my finger, and I had to leave cricket for 2 months. 31 for 1 ball still remaining in the over of Ramadan Dhaba, and we can see wonderful shot of Creek Vista Apartments. And the mesmerizing view of City of Lights, Karachi. It's absolutely mesmerizing, Zishan. The lights never go off in this part of the world, that is for sure. Especially during this holy month of Ramadan when people are awake till the Sehri. Especially youngsters. You check out the streets of Karachi, you'd find all the youngsters outside. Yeah, they are lucky enough to be residing in these Creek Vista Apartments, and they're watching all this action live from their homes. And sitting on your balcony with a cup of tea in your hand, watching exciting cricket in front of your eyes. Jag jai, Zishan, jag jai. That does sound like a beautiful dream. It happens to the people who are already living here. Not to us, though. Just playing with you, my friend. Well, back in our area, people just play tape ball cricket, and even that's something to watch out for. So much fun, yeah. This is Imran Randhawa's last over, conceding 7 off the over already. 1 ball to go. Zakir Malik on strike. Well, he was struck in his right thigh. Will he go after the bowler? He does! It's a flat one. 1 bounce into the fence. Zakir giving it the kitchen sink there, getting 4 out of it. He's showing his intent after 5. It's 35 for 1. That is his way of batting. He clears his front leg and takes the aerial route on the offside. This was a top shot in the end. Finally taking that revenge from Imran Randhawa after being struck on his legs. A beautiful boundary there on the offside to end the over with. It's 35 for 1 after 1. Ali Tareen is out here as well. It's 35 for 1 after 5. I have been joined by the legendary fast bowler Sikandar Bakht alongside me in the commentary box. Sikandar bhai, much better start in this batting power play from AO Hospitals. Yes, Zakir is playing very good shots. Even the Suhail too. Ali Majid will continue with his 3rd over. It's the final of the over of the batting power play as well. Chipped in the air and it's safe. Ali is actually fast in the air. He's a bit pacey bowler, and when he bowls, he's pretty quick in the air. That's why he deceives. See, and at the last moment of his delivery, he just pushes the ball. Once again giving himself room, thrashed over extra cover. That's going to go for yet another boundary. He has made this offside his own tonight, Zakir Malik. It's his 3rd boundary in that similar region. And he's timing the ball well. And this is the new trend of batting, that you don't play all over the ground, but you try to hit over the head. See, he's making room for himself. Although he's playing so much away from his body, but the hand-eye coordination so far is pretty good. Once again, taking the aerial route. This is going to be 2 boundaries in 2 balls. He does not believe in any threat from Ali Majid so far, Zakir Malik. Excellent hitting, excellent timing. And I said earlier that now the trend is to hit over the head of the cover fielders. You don't wait for them to play good grounded shots. Whenever you get a chance, play over the head of the fielders. That's the best way to do in this T20 cricket. It's just the 6th over of the innings, and we have already witnessed 8 boundaries being hit by these batters.
Fuller in length, he goes straight, he hasn't timed it. Hassan Khan takes it. A bit of an anti-climax, and Ali Majid is pumped up. Few words being exchanged between Ali Majid and Zakir Malik. Ali Majid finally winning this battle, and Zakir Malik must be thinking he has missed out an opportunity. Well, he was playing too many shots, and this was unnecessary shot. But because he already hit 2 fours, then you take the best way to deal with kind of bowling is to take a single. After hitting 2 fours, you just take a single, give a strike to the other player. Yeah, a big innings was due. A big innings was there to be taken, but Zakir Malik unfortunately walking back after scoring 19. It's 44 for 2. You can hear the cheer from the crowd. They definitely enjoyed that cameo from Zakir, although as Sikandabai mentioned, he could have opted for a single as well so that he could have lengthened his innings, but a very good catch taken by Hassan Khan running backwards. Ali Majid finally winning the battle after being struck for 2 boundaries in his previous 2 deliveries. Zakir Malik has now been replaced by Mohammad Akhtar, coming into bat at number 4. He also played a wonderful knock in the previous game. That's how he was dismissed. Zakir Malik again giving himself room. He was looking to go over the head of that fielder in mid-off, just sliced it in the end, and look at the way he took it, Hassan Khan. All those youngsters, that's how you take it, and that was the aggression being shown by Ali Majid. Ali Majid is not supposed to say anything to the batsman. The way he behaved, that's not good. The match referee should, reprimand him, call him, and tell him, no, this is not good. That's not a good thing to signal the batter to go towards dugout. He is already walking back. Shifting on the legs, played towards square leg. Single taken to get off the mark with. So an eventful over comes to an end from Ali Majid. 10 runs and a wicket off it in the end. After 6, it's 45 for 2. .45 for 2 after 6. Another aerial shot being captured from the gymnasium end of this DHS Sports Club. School towards the left. The on-field umpire signaling the batting power play is over. So 5 fielders are now allowed outside the 30-yard circle. Imran Randhawa just bowled 1 over, and now he has been replaced by Mohammad Shehzad. Another seamer. Another young seamer. Ali Tareen sitting with the crowd. That's a good sign to see. Ali Tareen will be aware of how good people of Karachi are. Well, to tell you something, in Pakistan, wherever you go, people are very nice. You don't have to show attitude. If you show attitude, then, they have the right to react. Otherwise, if you become friendly, they are everywhere you go around the world, people are very nice. Well, Sikandar, you were pretty nice to the crowd last night. I saw you giving away the autographs and the pictures that were being taken. Knocked him over. Unfortunately, Akhtar won't be able to repeat his heroics, and Ali Tareen is pumped up. He knows it's a big wicket at this stage of the game. Shehzad, it was just his second delivery of his spell, and he has managed to dismiss Mohammad Akhtar. I think it was too close to his body to play that cut shot. And the result is that he got an inside edge towards the stumps, and Ali Tareen is very happy about it. So 2 wickets lot in quick succession by AO Hospital. Mohammad Akhtar walking back after scoring just 1. It's 45 for 3.
45 for 3. We have just witnessed another wicket going down. 2 wickets now have gone down in the last 2 overs. Khalid Latif, the captain, now coming into bat at number 5. I was really surprised when he didn't come out to open the batting tonight. That's how Akhtar lost his wicket. Sikandar Bhai was right. It was too close to cut. The ball might have came back in as well after pitching. A bouncer to greet the opposition skipper. Well, the bowler should try everything. As we talk about the batsmen, they have so many things in their arsenal. So why not the batsman? Why not the bowler? They should keep on variation. Should be there, change of space, line, length. It's very important for every bowler, because if you're bowling to one straight line, then the batsmen know what you're going to do. Slightly fuller. The previous 3 deliveries, if you notice about Shehzad, he was looking to hit the deck hard, and he has got the height to do that as well. The delivery in which he got that wicket of Akhtar might have got some extra bounce on it as well. But overall, it's just turning out to be a very good over. Just a wicket and no runs off it so far. Down the leg side. It's going to be a wide, an extra run. Waste of effort this from the fast bowler. Overall, it was turning out to be a very good batting power play for AO Hospitals, but they managed to lose that wicket of Zakir Malik in the previous over, and now they have lost another one in this over from Shehzad. It's a good thing for AO Hospitals is that Khalid Latif, the captain, is still out there. He will have to steady the ship. Okay. Well, today he has to play with his experience. Important for him and his team. Just a single. Shehzad is bowling to a very tight length, keeping the ball within the stump, a little bit short, but still within the stumps. It's not a bad idea, because in T20 games, batsmen are always looking for a room to play the shot, to come under the ball to hit. And if the ball is short of length, then it's easier. Somebody is getting stretched. It's Sameen Gul who was getting his legs stretched. He just bowled 2 overs during the batting power play. Sameen Gul will have a role to play later on in the innings. Slightly full at the ball, hitting the pads. Good running, but an excellent stuff from the wicketkeeper as well. He might have seen an opportunity of a run out there, and in the end he just missed. But a successful over comes to an end from Shehzad now. There you see, as soon as he spotted, he threw at the wicketkeeper's end, and Khalid Latif was just a little slow in getting off the blocks, finally managing to get inside the crease. Leg by signal from the on-field umpire. It's 48 for 3, and more people have now joined us in the stadium. More young fans tonight, Sikandar Bhai, and it's all with a good side. Yeah. The youngsters should come and see the game. They should have the idea. They must be watching it on the television, so it's a good idea to bring them in the stadium and have a feel of that atmosphere. The lights are on, the players are running around, and it's fun watching it. I still remember when I was, I think 8 to 9 year old, I went to National Stadium with all my neighbors. Pakistan was playing against Australia, a test match. And I still remember that. I still have that view in my eye. That I can, sometime when I think about it, I remember where I was sitting. And I still remember Khalid Ibadullah scored 100. Hassan Khan has now been introduced into the attack, and he starts off with an absolute pearler of a delivery. Sohail Khan just having a look at the pitch. He never expected the ball to turn that much. Once again, look at the amount. What do you call it? A break, turn? Well, the groundman was saying, the pitch is not turning that much. Time to go towards Hina on the sidelines. Let's see who she has with her now. Thank you. I have with me Sadiq Mohammed, former Test cricketer. Thank you so much, sir, for your time.
पहले तो ये बताइए आप इस रमजान क्रिकेट को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? रमजान में तो मेरे ख्याल से बहुत इंजॉयबल होती है ये, क्योंकि इफ्तारी के बाद और फिर तरावियों के बाद कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए। तो आई थिंक कि ये जो रमजान टूर्नामेंट पिछले 20-25 साल से जो मुनक्किद किया जा रहा है, वो बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें आके खेलते हैं, तो बड़ा इंजॉयबल है। शॉर्ट क्रिकेट है, बड़ी इंजॉयबल क्रिकेट है। बाय द वे, रमजान क्रिकेट जो टूर्नामेंट से इनेकाद किया जाता है, ये यंग प्लेयर्स के लिए आप कितना अहम समझते हैं कि इन्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है? यंग प्लेयर को नेचुरली मिलता है, मगर विद द रॉन्ग एटीट्यूड, क्योंकि इसके अंदर ये जो प्लेयर डेवलप नहीं होता है इसमें तो ये है कि प्लेयर की लक कितना काम करता है और वो कितनी खूबसूरती से उसको मारता है गेंद को। तो to survive by hitting every ball, it needs a lot of luck. So I think public point of view से और घर में जो व्यूअरशिप होती है उनको देखने उनको काफी मजा आता है, but it's a good entertaining cricket. Right now, Tareen Academy and AO hospitals are playing against each other. तो क्या लग रहा है, कैसा मैच आपको दिख रहा है? दोनों तरीन के टीम के अंदर तो 3-4 PSL के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, बट इट्स ऑल क्लब लेवल क्रिकेट। मगर ये है कि PSL में जो भी प्लेयर खेलता है वो थोड़ा बहुत तो सीखता है वहाँ से। और यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि पहले 6 ओवर के अंदर उन्होंने 3 बैट्समैन आउट कर दिए AO क्लिनिक के। तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस हाउ टू सर्वाइव 20 ओवर्स। बहुत ही शॉर्ट वर्जन गेम है, मगर 20 ओवर्स को कैसे सरवाइव करना है और टू स्कोर 180 रन्स, दैट नीड लॉट ऑफ थिंकिंग। Thank you so much, sir. That's it. Back to the Coventry box. That was Hina alongside Sadiq Mohammed, former Test cricketer of Pakistan. We just witnessed a maiden from Hassan Khan meanwhile. Too wide down the leg side. Excellent take by the wicket-keeper though. Sadiq Mohammed was one of the best openers Pakistan ever had, from a very famous Mohammed family. 4 brothers were Test cricketers. The 5th one was a first-class cricketer, Raiz Bhai, and one of his nephews is a Test cricketer, Shoaib Mohammed, and many other nephews of a first-class cricketer. Hina should have asked him, do you miss T20 cricket or not? I will tell her that. A long family tree that have played cricket for Pakistan. And even if you talk about the son of Shoaib Mohammed, Shazar Mohammed has also played first-class cricket for Sindh. Right now he is working as a fitness trainer. Famous, as I said, they are very talented cricket players. Their mother, the Mohammed family's mom, was a badminton champion in India of her time. Yeah, she was some kind of a champion of the city where she was living, or national champion of badminton. So the whole family is involved in sports. Sports runs in their blood, I think. Slightly short. He was expecting the umpire to call it as a wide there, Sohail Khan. He has been left stranded at the other end, Sohail Khan. At one stage he was going after the bowling, but now even if you look at this strike rate, he's striking at under 70 runs per 100 balls. Slightly wild, but well within the guidelines. Ball should have been hit towards the point area, and it could have gone for a 6. Majority of time I've seen that in PSL. Ali Tareen back in the VIP box. A pick-up shot on the leg side. There is no failure at short mid-wicket. They have decided not to come back for the second one. He's changing his pace. He's changing his line in Len Shahzad in every delivery, which is a good sign. He looks pretty sharp, but the first over he bowled was within the stumps. Every ball was within the stump, hitting the pads. And this is the VIP area of the guests. And this is the second floor, which is the dressing rooms of the 2 teams. And we are sitting right a little bit up. Yes, here we are. Can you see my hand? Yes, this is me. Well, Shahzad looks pretty sharp.
Yeah, in these sort of pitches, in these slow and low pitches, you need a sharp fast bowler. Because if you are a medium pacer and if you're going to be bowling at length, it's going to be easy pickings. Because if you have got pace, then you can bowl at any stages of the innings. You can bowl with the new ball, you can bowl towards the depth, you can fire in those Yorkers. Actually, see, these are youngsters and they are learning. This is their learning process. Very good change of pace. Very good change of pace. The ball was, the ball within the line, within the stumps. That was the best part, and the change of pace. Yeah, Khalil Latif wanted to heave that away on the onside. Saud Kazmi sitting alongside Moin Khan. And giving him tips how to act like, as a villain. Saud is a very famous villain. Haven't seen him act that much, Saud Kazmi. But he played the first match, the celebrities game. And he won. His wife wasn't giving the interview last night, and she said, guided towards third man. It has gone fine, but the fielder is down there at third man. Just another single. Another decent over comes to an end from Shahzad. Just 4 off it. After 9, it's 53 for 3. $53 for 3 after 9. Security officials also making sure that the tournament is being played under peaceful environment. Well, it's always peaceful in this part of the city. I think it's the most peaceful area in defense. And Hassan Khan starting the second over, starts off with a full toss. It's the first run that he has conceded. His first over was a maiden. But he's spinning the ball. If you see his previous over, the ball spun like, almost 90 degrees. It was big spin. And when you have that kind of a spin, you cannot hit freely. You have to wait for the right ball to hit. It's not that easy. Well, Khalil Latif surely needs some fitness. He has to come and join the gym. He has been out of international circuit for quite a bit of time now, Khalil Latif. He last played for Islamabad United in PSL, in the second edition of PSL, if I remember. Well, on the right of your screen is Naveed Buland. He's also a cricketer, works for the police. He was a former MPA from People's Party and also a singer. A lot of talent in him. Things have definitely slowed down a bit, especially after the batting power play, especially after they lost that wicket of Zakir Malik. Few fireworks, few good shots were expected from Akhtar, but unfortunately he could not score many runs tonight. And after that, Sohail Khan even has found it difficult to time the ball and find the gaps. Swept away on the onside. Chance! That has been dropped. But that was a wonderful effort nevertheless. That ball will go past the boundary rows, but full marks to the effort there, Sirandabai. Yes, fielding standard is pretty good. And I've noticed some youngsters have taken brilliant catches here. And this one too had a good attempt. That was a desperate shot, I will say. He was there almost. But bad luck for the fielder. Good luck for the batsman. Yeah, they needed that boundary, AO Hospitals. And if you look at that attempt from that catch, I think he was in two minds whether to go for that drive on the left side or to get into straight position while taking that catch. In the process, just couldn't pounce onto it. Another shot attempted. This time it should be a regulation chance, and yes, it is. Sohail Khan has absolutely thrown his wicket away here. Too many shots. And same shot here. As I told you, when the ball is spinning that much and the ball is not coming quicker off the pitch, then it's very difficult to hit a big shot. It's straight in the hand of the fielder. He stayed there for quite a bit of time. Sohail Khan could just score 25 runs tonight. It's 59 for 4.
59 for 4 after 9.5. We just witnessed Sohail Khan losing his wicket. There was a chance that was dropped by the fielder at similar position. Sohail Khan did not learn from his mistake. Hassan Khan although did. It's Arif Khan who has now replaced Sohail, a left-hander. That's how he got dismissed. So Hassan Khan bowled it much slower through the air, inviting the batter to go for that big shot again, and he was a little too early into that stroke, and that's how you take it. He got a boundary in the previous ball. Did he need to go for that shot, especially after his side in a bit of a precarious position? Arif Khan is so lucky that the inside edge did not roll back onto his stumps. A successful over comes to an end from Hassan. After 10, it's 59 for 4. सोहेल ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए एओ हॉस्पिटल्स के लिए 25 रन्स 32 गेंदों पर, और जाकिर सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है अब तक 19 रन्स 13 गेंदों पर। इस वक्त खालिद लतीफ और आरिफ जो है वो बैटिंग कर रहे हैं एओ हॉस्पिटल्स की तरफ से। Khalid Latif is still out there. He needs to play a captain's knock for his side tonight. Chipped. Just a single. I don't think he will be looking to go for aggressive strokes at this stage, Khalid Latif, but at least he needs to pick up singles and keep the scoreboard moving. Boundaries have clearly dried up. They're not even attempting those singles, and they're losing wickets now at regular stages of the game. But Khalid keeps that experience, which makes him so dangerous at this stage. He can just rotate the strike and then take the charge against the opponents. And he has the ability to score runs for AO Hospitals at this stage. Arif is currently on the strike. Khalid Latif has asked for something. Maybe his gloves? No. He wants to change his shoes. He has called someone from the dugout with a new pair of shoes. Yeah, pretty slippery conditions out here, especially with the dew that has fallen so far on the turf. जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब,
मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल DH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त सेफ जियो सुपर पे जीत. Shahzad now changing his angle, coming around the wicket to the left-hander. Misfield, as they say, never run on the misfield. They can definitely not afford to lose another wicket here, especially on a run out. He's played it with soft hands on the outside. Hassan Khan slightly misfields it, and that's a good sign to see. There is always a fielder backing up. There is no need to take risk at this moment, because you're already 4 down and you need to build a partnership here. So you have to be careful. Otherwise, a run out or a wicket at this stage would cost a lot. Once again hitting it in that similar direction. Again, Hassan Khan rolls over it. This time they managed to complete that single. But you got to give credit the way all the fielders have fielded tonight for the Tareen Academy. Hassan is looking so much active, and he's a very good fielder. He has represented Quetta Gladiators. He's quick. He bowls well. He's also handy with the bat. So it's a proper all-round cricketer. Any side having him have an edge in all 3 departments. He was a little disappointed with that fielding effort. Straight away hitting it straight towards the fielder at mid-off. It's getting a little more tough now for AO Hospitals, because the boundaries are not coming. We are witnessing dot balls. They are only managing to score 3 or 4 runs every over. But this man on the screen could be very dangerous here. If he gets the ball connecting to his bat, and if he gains the momentum here, then definitely AO Clinic or AO Hospital will be benefited from his batting. Well, definitely few more runs needed by the captain. Once again, a good delivery. Bowling according to his feel, and a very good field setup as well. Extra cover fielder is standing in fact pretty close to the playing pitch. What can he do at this stage, Khalil Latif? What sort of shots can he manufacture? Fine leg is inside. He can go for that scoop. He can go over extra cover as well. Even mid-off is inside the 30-yard circle. He pulls it. Goes straight to Hassan Khan again. The ball is following him everywhere so far. Just 3 runs in the over from Shahzad after 11. It's 62 for 4. Drone shot, Geo Super's production. You are watching Maple Leaf HD Putty Ramadan cricket tournament here at DH Sports Club Moin Khan Academy. And we have been joined by, it will go straight to the fielder, just a single. Meanwhile, we have been joined by Danish Anis. Danish bhai, welcome. Thank you, Muzammil. Meanwhile, अगर हम Tareen Academy की बात करें, they're showing exactly how strong they are. AO Hospital की टीम on paper कोई हल्की टीम नहीं है, अच्छे players थे इसमें, but शानदार bowling का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर Tareen Academy. Exactly ऐसा ही है. हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि एक यूनिट की तौर पे नजर आ रहे हैं. बड़ा शॉट और यकीनी तौर पे ये छक्का हो जाएगा. कमेंट्री बॉक्स की तरफ आया है ये बॉल और शानदार शॉट लॉन्ग गॉन की जानिब. बस थोड़ी सी बचत हो गई दानिश भाई हमारी, वरना बॉल शायद कमेंट्री बॉक्स में होती. A superb hit by Arif there. The ball coming straight towards us. मुजम्मिल शायद आप ये बात नहीं जानते, लेकिन पिछले 4 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई बॉल मेरी तरफ आ जाए, और आप देखिए मेरी किस्मत कि मैं इस वक्त कॉम बॉक्स में बैठा हुआ था और उस वक्त बॉल आया.
वरना मैं यही खड़ा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कैच ए करोड़ मोमेंट हो जाता। नहीं, मैं तो रेलिंग वेलिंग पकड़ के डाई शाई मार देनी थी मैंने, वो वाला सीन है। This time Hassan Khan pulling his pace back a little bit, pulling his length as well. Back foot पे गए आरिफ, sign of a good player मुजम्मिल, कि आपने एक छक्का लगाया उसके बाद स्ट्राइक रोटेट की सिंगल लेके। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है वो इस तरीके की है कि जहां पर आपको स्ट्राइक रोटेशन के साथ ओवर में अगर एक आध बाउंड्री मिल जाती है तो फिर आपको रोटेट करनी चाहिए स्ट्राइक, और स्कोर बोर्ड को जो है वो चलाना चाहिए, बहुत जरूरी है इस स्टेज पर। हसन खान इज अ प्रीटी डिसेंट बॉलर, अपना तीसरा ओवर करा रहे हैं, सिर्फ 14 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किया है। ये खालिद लतीफ का फैक्ट, लेकिन ये सीधा फील्डर के हाथों में, तो यहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान एओ हॉस्पिटल को खालिद लतीफ की सूरत में। खालिद लतीफ मिसजज कर गए बॉल को और सीधा बॉल जो है वो फील्डर के हाथों में। मुजम्मिल, यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए हसन खान की कम है। इससे पहले ही डिलीवरी पर उनको छक्का पड़ा था, उसके बावजूद आप देखें कितनी जबरदस्त लूप के साथ बॉल की है, फ्लाइट की है। ही डिड नॉट ट्राई टू पुश इट इन, ही लूप्ड द बॉल एंड गॉट द एरर आउट ऑफ खालिद लतीफ। Exactly, this is shows his experience. So Khalid Latif is now walking back to the pavilion. He has scored AO Hospital 70 for 5 after 11.4 overs. When it comes to fitness, मुजम्मिल, जब एक एथलीट अपने स्पोर्ट्स से दूर होता है, Meanwhile, Lal Kumar has joined the crease. बिल्कुल हम फिटनेस की बात कर रहे थे। दिस इज हाउ खालिद लतीफ गॉट आउट। जब एक एथलीट खेल से दूर होता है, बिल्कुल और यहाँ पर जोरदार अपील और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हो गई। इसका मतलब एक और नुकसान एओ हॉस्पिटल को यहाँ पर उठाना पड़ेगा। हसन खान ने अपनी दूसरी विकेट यहाँ पर ली है और अफनान को अब वापस जाना पड़ेगा। The batter wasn't too happy. He was telling the umpire, or he was trying to tell the umpire that he had a connection with the bat. Lal Kumar out for a golden duck. It's 70 for the loss of 6. सो दानिश, हम बात कर रहे थे फिटनेस की। ऑब्वियसली जब आप क्रिकेट से बहुत दूर होते हैं, और एक वक्त याद है जब शर्जील खान और खालिद लतीफ 2016 में उनका ओपनिंग पैर जो सेट हुआ था, और उस वक्त काफी कामयाबियां दिलाई थी इन्होंने पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त के बाद से दोनों क्रिकेटर्स बाहर हुए और दोनों की एक वजह फिटनेस भी थी। बिल्कुल मुजम्मिल, और अब हम बात करें करंट लॉट की, तो वह एक से बढ़कर एक टैलेंट आपको नजर आता है। 7 से 8 ओपनर्स। अफनान खान आए हैं नए बैटर, इज अ राइट हैंडेड बैट्समैन। बड़े ऑप्शंस हैं हमारे पास मुजम्मिल, मजेदार ऑप्शंस। बिल्कुल ऐसा ही है, ऑप्शंस होने के साथ साथ बॉलिंग में तो हम हमेशा से रहे हैं, लेकिन इस दफा दानिश हमने पीएसएल में देखा कैच का शाउट था, बट बॉल जो है वो नो मैंस लैंड में गिरी। 12 ओवर के बाद 70 पे 6। This is how the bowlers have bowled till now for Tareen Academy. 2 wickets for Ali Majid, bowled beautifully today. 3 overs में से 20 रन दिए हैं उन्होंने अभी तक। हसन खान ऑलरेडी 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं, सिर्फ 13 रन 14 रन दिए इनफैक्ट 3 ओवर्स में। बिल्कुल ऐसा ही है, हसन खान का एक्सपीरियंस है, मैंने अभी भी बात की कि पीएसएल भी खेले हुए हैं, डोमेस्टिक में भी काफी अच्छा, और एक ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और फील्डिंग में भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं। तो एक ऑलराउंड क्रिकेटर हर T20 आई टीम की नीड होता है T20 फॉर्मेट में।
अनफॉर्चुनेटली जितना टैलेंट हसान खान में है, पीएसएल में उस किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखा नहीं पाए और सैडली उस तरह से सेट नहीं हो पाए जिस तरह हम दीगर यंगस्टर्स को सेट होते हुए देखते आए हैं. बट ही इज गॉट अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम. ही इज यंग, बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. फैसल अकरम चाइना मैन, और पाकिस्तान क्रिकेट सर्कल में बहुत कम चाइना मैन दानिश हमने देखे हैं और ये उभरते हुए चाइना मैन है जो कि What a peach of a delivery there by Faisal Akram. Imagine that first ball and you pitch it perfectly. ये आप देख सकते हैं, शेप किया बॉल को और बॉल बैट्समैन से बिल्कुल दूर चला गया. हालांकि देखा जाए तो बैट्समैन बिल्कुल लाइन में अपना पैर लाए थे आगे. Once again, Faisal Akram bowling that one slower. कोशिश की थी कि दूसरे के लिए भागे, बट आप देखें कि क्या शानदार अंदाज में लॉग ऑन से फील्डर भागते हुए आए हैं. उन्होंने डिनाई किया दूसरा रन. यही खूबसूरती होती है T20 की कि आपको एक एक रन बचाना पड़ता है, क्योंकि ये एक एक रन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इस स्टेज पर दानिश अगर बात करें कि फैसल अकरम जैसा अगर बॉलर आ जाए जहां ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे हो, 6 विकेट्स डाउन हो, तो फिर आपके लिए मजीद परेशानी का बाइस बनता है ऐसा बॉलर. फैसल अकरम will redo that one. हम लेफ्ट आर्म चाइनामैन की बात कर रहे थे, तो एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन की जरूरत है पाकिस्तान को, despite the fact that we have several good bowling options, चाहे हम पेसर्स की बात करें या स्पिनर्स की बात करें, but एक अच्छा चाइनामैन मुजम्मिल हमेशा डिफरेंस क्रिएट करता है. बिल्कुल ऐसा ही है. दुनिया भर में है. साउथ अफ्रीका के पास मौजूद है शमसी, और यहाँ पर एक और अच्छा गेंद फैसल अकरम की तरफ से, बहुत ही अपने स्किल्स पे रहते हुए और लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर बॉल कर रहे हैं. तो हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका के पास तबरेज शमसी हैं, कुलदीप यादव जो है इंडिया के पास है, तो इस तरीके के बॉलर्स मौजूद हैं. Pushing that one little quicker, denying him. Oh, that is beautiful stuff. Just amazing cricket from Tareen Academy. जान मारते हुए नजर आ रहे हैं. दे आर टू एग्रेसिव इन द फील्ड. बॉल पिक करते के साथ ये देखें कितनी शानदार, बिल्कुल फर्स्ट हैंड पे थ्रो किया और जरा सी बचत हो गई यहाँ पर, अदरवाइज ही वुड हैव गॉन. और यहाँ पर बोल्ड कर दिया है फैसल अकरम ने. पीछे से गेंद आया और स्विंग होकर सीधा विकेटों में. तो यही जो बात कर रहे थे दानिश के चाइना मैन की, यही खूबसूरती होती है कि वो लेग स्टंप, आउटसाइड लेग स्टंप से बॉल अंदर स्पिन करने की भरपूर सलाहियत रखता है. That was a wrong one from the bowler there. Brilliantly done by Faisal Akram. You've got to salute his control. अब देखिए कितने अच्छे तरीके से आउटसाइड द लेग स्टंप से बॉल को लेके आए और अराउंड द लेग्स डिसीव करके बॉल किया. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अफनान खान को 0 रन, कोई रन ना बना सके और वापस जा रहे हैं 71 पे 7. एओ हॉस्पिटल्स की टीम को यहाँ पर एक पार्टनरशिप की जरूरत है. आई गेस यही एक चीज है जो मिसिंग नजर आई है इस पूरी इनिंग्स में. हर प्लेयर आता गया और रैश शॉट्स खेलने के चक्कर में वापस पवेलियन लौटता गया. कहीं ना कहीं सिंगल्स और डबल्स की मदद से थोड़ी सी मजामत फराम करनी जरूरी थी. अगर इसी तरह खेलते रहे तो 109 रन बनेंगे. अगर 6 रन पर ओवर के हिसाब से खेले तो 113 रन बनेंगे. ये दोनों स्कोर्स काफी नहीं होंगे तरीन अकेडमी के खिलाफ. बिल्कुल ऐसा ही है. बैटिंग बहुत स्ट्रांग है उनकी, और जैसा आपने बात की पार्टनरशिप, मेरे ख्याल से यहाँ पर उनको अब किसी मसीहा की जरूरत है जो आके 20 से 25 रन इनको ऐड करके दे और यहाँ पर ये 100, 110, 120 भी बनाए तो कुछ डिफेंड करने के लिए बॉलर्स के पास होगा. आरिफ ने कुछ तेवर जरूर दिखाए हैं. आरिफ को यहाँ पर चार्ज लेना होगा और कमांड करना होगा सिचुएशन को. मोहम्मद असद इज द न्यू बैटर इन. और एक बार फिर आप विकेट देख सकते हैं. रॉन्गन था बॉल और बिल्कुल ही रीड नहीं कर पाए बैटर और बोल्ड हो गए. Right then, what can Faisal Akram do now? I beg your pardon, the over has ended. Sharoon आए हैं अब. शरून, इन्होंने भी प्रीवियस मैचेस में काफी अच्छी बॉलिंग करवाई है. और दानिश, इस पिच पे अगर आप स्पिनर हैं तो आपकी ईद है. ये शरून सिराज जो कप्तान भी हैं इस टीम के.
This time banging it in, a little short, cramping the batter for space there and room. Sharoon Siraj is known for his batting, लेकिन एक पार्ट टाइम बॉलर भी हो साथ साथ आप, तो आपकी वैल्यू में और ज्यादा इजाफा हो जाता है मुजम्मिल। बिल्कुल ऐसे ही है, और स्पेशली T20 क्रिकेट में यू नीड अ क्रिकेटर हु कैन परफॉर्म इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स। फील्डिंग भी बहुत मैटर करती है इस फॉर्मेट में, और जब आप ऑलराउंड क्रिकेटर होते हैं तो फिर आपकी दुनिया भर में जिस तरीके से फ्रेंचाइज क्रिकेट बढ़ गई है अब, तो आपकी वैल्यू भी होती है। This time overdoing it a bit. पहला ही ओवर करा रहे हैं शरून अपना, थोड़ा सा टाइम लेंगे कंट्रोल हासिल करने में। ड्यू फैक्टर भी एक काफी रोल प्ले कर रहा है इन तमाम मैचेस में मुजम्मिल। बिल्कुल ऐसा ही। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि खालिद लतीफ को नए पेयर ऑफ शूज भी मंगवाने पड़े शायद स्लिप होने की वजह से, तो आप ड्यू है काफी। Angling the ball in that time with his arm. अच्छा ठीक है, करते हैं ब्रेक। और यहाँ पर नाम है शाबाश। सिर्फ पंच किया 1 रन के लिए, और हसन खान एक बार फिर फील्ड में मुतहरिक नजर आए। और शरून अब तक अच्छी गेंद करते हुए सिर्फ 3 रन दिए हैं 5 गेंदों पर। आप तरीन एकेडमी के किसी भी एक प्लेयर के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो एक्टिव हैं, सारे के सारे ही एक्टिव हैं। एक बार फिर 1 रन। End of the over after 14 is 75 for 7. यहाँ पर शरून की तरफ से ये भी अक्लमंदी का तकाजा था कि एक ओवर बहुत क्विक फायर उन्होंने कराया और विद इन मिनट्स अपना पूरा ओवर गुजार दिया, सिर्फ 4 रन दिए। फैसल अकरम विल कम बैक फ्रॉम द अदर एंड। एक ओवर में 1 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। जी बिल्कुल, अब तक पहला ओवर बहुत अच्छा करवाया, और आपने बड़ी अच्छी बात की इससे पहले कि तरीन एकेडमी का हर क्रिकेटर जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है। और यहाँ पर पंच करके रन लेना चाहते थे लेकिन कामयाब ना हो सके। फील्डिंग बहुत एग्रेसिव लगाई हुई है, 2 फील्डर आगे लिए हुए ऑफ साइड पे। इस स्टेज ऑफ द गेम पर इस तरीके की फील्डिंग, और हो भी क्यों ना, क्योंकि टेल एंड अब यहाँ पर बैटिंग कर रहा है। एक बार फिर एक फ्लाइट डिलीवरी जिसमें ज्यादा पेस नहीं थी, एक्स्ट्रा कवर पर 1 ही रन मिल पाएगा। आप देखें एक्स्ट्रा कवर के साथ साथ लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, साथ साथ एक डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग भी मौजूद है। यही वजह है कि फैसल अकरम काफी फ्लाइट कर रहे हैं, बॉल को इनवाइट कर रहे हैं बैट्समैन को लंबा शॉट खेले। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार फिर तैयार, लंबा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन फैसल को यहां पर खेलना आसान बात नहीं है, और फैसल इस बात का बार बार सबूत दे रहे हैं कि उन्हें लंबा शॉट लगाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। Well played stroke there by Arif for no run. He looks like a good batter. He just needs to stay there. He needs some assistance from his non-striker. A rare loose delivery from Faisal Akram. इतनी रेयर थी कि बैट्समैन खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो लूज डिलीवरी कराएंगे, लेकिन वो चांस लेना चाह रहे थे कि शायद बैट्समैन बड़ा शॉट खेलें और वो कोई रिस्क लें और गलती कर बैठे और फिर आउट हो जाए। कैच का कॉल था, बट यहाँ पर सिर्फ 1 ही रन ले पाएंगे, तो मजमूई तौर पे 3 रन दिए फैसल ने अपने दूसरे ओवर में। एओ हॉस्पिटल 78 पे 7 आफ्टर 15 ओवर्स।
This is how the bowlers have performed till now. 7 bowlers used already. 2 wickets for Ali Majid, 3 for Hassan Khan. 1 wicket already for Faisal Akram. 2 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए हैं. Meanwhile कॉम बॉक्स में तब्दीली मुझे फैजान लखानी ज्वाइन कर चुके हैं. And I'm sure फैजान लखानी would be really happy. No one gets happier than him when he sees young talent perform the way they are performing right now. फैजान ऑफ कोर्स, और मुझे बड़ी खुशी हुई अली माजिद की कारकर्दगी में तसलसल देखते हुए. क्या कमाल टैलेंट है. कंफ्यूज हो जाते हैं बैटर्स इनको खेलते हुए. लेकिन अभी मैं मुजम्मिल से भी डिस्कस कर रहा था फैजान के लेफ्ट आर्म चाइनामैन की बड़ी वैल्यू है और पाकिस्तान में हमने इतने देखे नहीं है, और इस कैलिबर का लेफ्ट आर्म चाइनामैन पाकिस्तान खेलता है नियर फ्यूचर में. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर अकरम आने वाले वक्तों में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हैं. बड़े वैल्यूएबल प्लेयर बन सकते हैं, बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए. और आप देखें अमूमन हम देखते हैं कि जो लेग स्पिनर्स होते हैं या चाइनामैन होते हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है कंट्रोल करने में अपनी लाइन और लेंथ को, बट फैसल अकरम इज ब्लेस्ड विद रियली इमैक्युलेट कंट्रोल. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. काफी कंट्रोल्ड उनकी बॉलिंग है. A rare lack of discipline from Tareen Academy there, conceding an overthrow. लेकिन जो पोजीशन एओ हॉस्पिटल की इस वक्त है 16वें ओवर में, सिर्फ 80 रन ही बन पाए अब तक. और फैजान किसी भी अंदाज से हल्की टीम नहीं है एओ हॉस्पिटल्स की. बड़े बड़े नाम इस टीम का हिस्सा हैं जो डोमेस्टिक लेवल में क्रिकेट खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं. बड़े नाम हैं और पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर चुके हैं खालिद लतीफ. बिल्कुल, उनको आप आउट क्लास कर दें इस तरह. बड़ी परफॉर्मेंस. यही फर्क होता है जब आप एनर्जेटिक प्लेयर्स अपने साथ होते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के लेके चलते हैं, तो फिर उस टीम के रिजल्ट्स तो आते ही हैं सामने. Right word used there by Faizan Lakhani. They've been so energetic throughout. Catch it! इस वक्त आप स्ट्रैटेजी भी देखें अगर शरून सिराज की. लुक्स लाइक अ गुड लीडर. इस वक्त इजी सिंगल्स दे रहे हैं बैटर्स को. सारे फील्डर्स बाउंड्री लाइंस पर हैं. बड़ा शॉट खेलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं. इनवाइट जरूर कर रहे हैं. बिल्कुल. शरून भी ऑल्दो यंग है बट डोमेस्टिक क्रिकेट का अच्छा तजुर्बा इनके नाम मौजूद है. साउथ पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं. एक बार फिर शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा. असद को यहां पर साथ देना होगा आरिफ का. अली माजिद के कोटे की आखिरी बॉल जिसमें सिर्फ 1 रन बना और इसके साथ 16 ओवर्स का इख्तिताम. एओ हॉस्पिटल से स्कोर 83 रन 7 विकेट नुकसान पर. एओ हॉस्पिटल्स की अगर आज अप्रोच की बात की जाए तो शायद थोड़ी सी चूक हो गई उनसे. हर बैट्समैन आता गया और पवेलियन वापस लौटता गया. दे केप्ट ट्राइंग टू हिट बिग स्ट्रोक्स. They could have established a partnership. They could have taken more singles and doubles. Batting card आपके सामने. None of them could get going. Sohail looked impressive, scored 25. Zakir Malik looked dangerous, scored 19. और उसके अलावा कोई भी बैटर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका. पिछले मैच में चले थे बट आज परफॉर्म ना कर सके. और अगर आप पिछला मैच भी एओ का देखते हैं तो एक मौके पे फंस गई थी टीम, स्ट्रगल करने लगी थी. वो आखिरी लम्हात में अख्तर ने ही मैच निकाल के दिया था बट आज अख्तर आउट हो चुके. शायद अपने आप को इतना टाइम नहीं दिया अख्तर ने आज. मीनवाइल फैसल का स्पेल जारी रहेगा. बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है अब तक कि सिर्फ 5 रन ही कंसीड किए 2.1 ओवर्स में अपने. यंग लड़का है फैजान, आप देखें, लेकिन किस जबरदस्त ठहराव का मुजाहिरा कर रहा है. He's pulled back the pace, बिल्कुल स्लो फ्लाइटेड डिलीवरीज कर रहे हैं, काउंटिंग ऑन द पिच टू डू इट्स वर्क. Batsmen are finding it really difficult to put him away. एक और सिंगल यहाँ. और जो बात आप फैसल अकरम की करें ना, मुझे जो बात जो बड़ी इंप्रेस करती है इस बॉलर में कि बड़ी कंट्रोल के साथ ही बॉलिंग करते हैं, अपने एरियाज को मिस नहीं करते हैं. इनको पता है कि किन टारगेट्स पे गेंद करानी है, किस बॉलर को किस तरह पकड़ना है, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं. It was a decent wrong one as well. Of course. ये देखें
ये वही है जैसे हम टेप बॉल में कहते थे, मारो ना। बड़े हिट्स नहीं लगा पा रहे। आरिफ विकेट पे मौजूद हैं। आरिफ से उम्मीद लगाई जा सकती है कि एओ के लिए वो कुछ रन्स कर पाए, अच्छा डिफेंडेबल टोटल बनाने में मदद दे एओ हॉस्पिटल को। वो आरिफ में पोटेंशियल तो यकीनी तौर पे नजर आ रहा है, बट अभी तक कोई साथ नहीं दे पाया उनका, क्रीज पर रुक नहीं पाया उनके साथ। व्हाट कैन ही डू? असद 12 गेंदे खेल चुके हैं, 9 रन बनाए अब तक। देखते हैं बॉल कितना साथ देते हैं इनका। यहाँ रन आउट हो सकते थे अगर अच्छी थ्रो होती। He was really quick at it. फौरन लपके बॉल पर और फौरन अपने हाथ से निकाली। अगर डायरेक्ट हिट होती तो खतरनाक हो सकता था यहाँ पर। ये देखें, रनिंग भी अच्छी रही दोनों के दरमियान, इस बात की भी दाद देना होगी। नहीं, बट आई बिलीव कंफर्टेबली अंदर थे। Once again, a beautiful delivery by Faisal Akram, pitching right in line, moving away from the batter. After 17, it's 88 for 7. आज ये दूसरा मैच चल रहा है फैजान, और दोनों ही मैचेस आज की काफी लो स्कोरिंग मैचेस रहे हैं। पहले मैच में 102 रन का हदफ मिला था टीम को जीतने के लिए, और इस मैच में भी ऐसा लगता है कि 110 115 ही बन पाएंगे। जिस तरह की बॉलिंग को सपोर्ट मिल रही है यहाँ की कंडीशन में, बैटिंग इतनी डिफिकल्ट होती जा रही है, ऐसे में 130 सिम्स अ वेरी गुड टोटल। बट कल उमर एसोसिएट्स ने साबित किया कि कंडीशंस होंगी दूसरी टीम्स के लिए। अगर आप प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं, अगर आपकी इंटेंट है और आप फ्रंट फुट पर आकर खेलना जानते हैं, तो आप इन कंडीशंस में भी रन कर सकते हैं। बट नॉट एवरी टीम इज उमर एसोसिएट्स। अग्रीड। सो जो तजुर्बा उमर एसोसिएट्स के पास है वो हर किसी के पास नहीं। अच्छा बॉल था इमरान का ये। स्पीकिंग ऑफ एक्सपीरियंस, इमरान रंधावा को भी अब काफी एक्सपीरियंस हासिल हो चुका है मुख्तलिफ लीग्स में, और मुख्तलिफ जगहों पर हम इनको अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते हुए देख चुके हैं। बिल्कुल पीएसएल का तजुर्बा भी नहीं हासिल है, और जब पीएसएल में इमरान रंधावा को पाकिस्तान के और दुनिया के दीगर प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिला होगा, तो यकीनी तौर पर उससे बहुत कुछ सीखा होगा उनके तजुर्बा से। इस बार बॉल को गाइड किया है थर्ड मैन की जानिब, बॉल बैट का फेस ओपन किया। सिर्फ एक रन ही हासिल कर पाएंगे। आप सिर्फ डगआउट शेयर नहीं करते फैजान, आप नेट्स में भी इंटरनेशनल प्लेयर्स को बॉल करते हैं, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इनफैक्ट आप अपने अपोनेंट से भी सीखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल होता है पीएसएल में। जब ये देखें पहले ये शॉट कि किस तरह यहाँ पे एक रन बनाया, बट टॉकिंग अबाउट पीएसएल और शेयरिंग ड्रेसिंग रूम और प्लेइंग अगेंस्ट better opponents, you always get to learn new things. Talking about learning from opponents, during PSL I was interviewing Rahmanullah Gurbaz, who represented Islamabad United in PSL. तो मैं उनका इंटरव्यू करा था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ऑल्दो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम उनके अपोनेंट थे, बट दोनों मर्तबा जब आमना सामना हुआ तो वो बाबर आजम के पास गए और उनसे टिप्स हासिल की, और उन टिप्स पर अमल करके बाबर की टीम में अगेंस्ट कामयाबी भी हासिल कर ली। बिल्कुल, सीखने का अगर आपके अंदर शौक है फैजान, तो आप कहीं भी किसी से भी सीख सकते हैं। बेशक आप टीवी पे देख के भी सीख सकते हैं। इस बार थोड़ा सा रूम बनाया, बॉल की पिच तक आए और उसको खेला एक्स्ट्रा कवर की जानिब, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। अपने बैट से इतने ज्यादा खुश नहीं है फिलहाल आरिफ, ही वांट्स टू चेंज इट। पहले ओवर में 11 रन कंसीड करने के बाद इस ओवर में अब तक बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इमरान रंधावा। 2.5 ओवर हो चुके हैं, 15 गेंदें हो चुकी है सिंस लास्ट बाउंड्री।
प्रेशर ऑफ कोर्स इसका फील कर रही होगी एओ हॉस्पिटल की स्क्वाड भी। पर यहाँ पर इनको फोकस करना होगा, तमाम 20 ओवर्स इनकी बैटिंग जारी रहे। कॉट बिहाइंड की अपील जरूर की मगर अंपायर मुतासिर ना हो सके। कीपर भी ज्यादा मुतासिर नहीं थे, वो तो उन्होंने तकल्लुफन अपील कर ली। The ball probably bounced after it crossed the bat. ये देखें, गालबन आवाज जो थी वो बैट के उसकी थी, टकराने की। क्राउड यहाँ पर अलबत्ता ज्यादा बड़ा नहीं है, बट जितना भी है वो मैच को एंजॉय कर रहा है पूरी तरह से। देखिए, अगर हमारी राइट साइड पर कमेंट्री बॉक्स की राइट साइड पर देखें तो अच्छे तमाशाई बैठे हैं। जैरिस स्टैंड और उमर एसोसिएट स्टैंड में सब तमाशाई जरूर मौजूद है। Asad trying a cheeky shot there. After 18, it's 90 for 7. चल फैसल आ जा यार। बिल्कुल मुतमईन ना होंगे एओ हॉस्पिटल की डगआउट अब तक की कारकर्दगी से। 18 ओवर्स में अब तक सिर्फ 90 रन ही बना पाए। 5 की औसत से बैटिंग कर रहे हैं, जो कि कतई इंप्रेसिव नहीं T20 के पेस के मुताबिक। 2 ओवर्स का खेल बाकी। फैसल अपने कोटे का आखिरी ओवर कराएंगे। अब तक 3 ओवर्स में सिर्फ 9 रन कंसीड किए उन्होंने। बॉलिंग एंड पर खतरा जरूर होगा, मगर खासा लो रहा है ये वाला बॉल, बिल्कुल बाउंस नहीं मिला इस बार फैसल को, बट ही इज बॉलिंग सो वेरी वेल। आरिफ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाउंस मिलेगा, लेकिन कैन थोड़ा नीचे रहा। यहाँ एक बार फिर उठा दिए बॉल, खतरा, लेकिन थोड़ी फील्डर से आगे गिरी गेंद। कोई खतरे की बात नहीं। और इसी किस्म के शॉट्स इनवाइट कर रहे हैं फैसल अकरम, बिकॉज उन्होंने फील्ड कुछ ऐसी सेट की हुई है कि उनको कामयाबी मिल सके। इस बार कदमों का इस्तेमाल और गेंद को कनेक्ट ना कर सके और आउट हो गए, अपने विकेट गवाई। 8वां नुकसान एओ हॉस्पिटल को, दूसरी कामयाबी फैसल अकरम के कोटे की। अगेन रैश शॉट फ्रॉम असद। वो देखते आ रहे थे फैसल अकरम को कि उनको टर्न भी मिल रहा है, वो फ्लाइट भी इसी वजह से दे रहे थे ताकि ट्रैप कर सके। He fell right into the trap. It was a nothing shot towards the end. मोहम्मद असद 18 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद पवेलियन में वापस। AO Hospital would be really disappointed with this performance. बिल्कुल सेटल नजर नहीं आए थ्रू आउट दी बैटिंग इनिंग्स। हुजैमा नए आने वाले बैटर, और अगर एओ हॉस्पिटल की बैटिंग पोजीशन की अभी बात करें तो ज्यादा परेशानी या हैरानी की बात नहीं है ये, क्योंकि पिछले मैच में भी जिस तरह की बॉलिंग की थी तरीन एकेडमी ने, अपोनेंट को 62 रन पर ही बुक कर दिया था। और आज एओ जैसी मजबूत टीम अगर उनकी बॉलिंग के आगे स्ट्रगल कर रही है तो इसका मतलब है कि दे हैव गॉट रियल स्पार्क इन देयर बॉलिंग लाइन। Wrong one this time by Faisal Akram. ये शाबाश। Huzaima playing it defensively. बहुत जबरदस्त बॉलिंग अब तक फैसल अकरम की जानिब से, और एक के बाद एक दूसरी रॉन्ग वन फैजान। और जिस तरह स्टंप के माइक से जो हमें आवाजें आ रही हैं, आखिरी ओवर बॉल है। उनके टीममेट्स भी जिस तरह की बॉलिंग की है फैसल अकरम ने।
And with that, an amazing spell comes to an end from Faisal Akram. 4 overs में 10 runs के बस 2 wickets हासिल की. Brilliant bowling by Faisal Akram there. अपने आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन कंसीड किया और 1 विकेट हासिल किया. इसके साथ 19 ओवर्स का इख्तिताम. एओ हॉस्पिटल से स्कोर 91 रन 8 विकेटों के नुकसान पर. So, Faizan, as far as the comm box is concerned, a lot of people out there are wondering why we are being bilingual. हम क्यों अंग्रेजी और उर्दू साथ-साथ कमेंट्री कर रहे हैं. तो उन सब के लिए मैसेज ये है कि ये मैच भारत में भी देखा जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में भी देखा जा रहा है. And we just want to be inclusive. We just want to include all the fans. The non-striker never left the crease. अगर क्रीज छोड़ी होती तो नुकसान पड़ सकता था यहाँ पे. Tough call there. Very tough call. Imran Randhawa not impressed at all. ये देखें. It's okay. Put that behind you. चले 1 रन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. Especially when they're 8 wickets down and they've scored 92. इस बार खॉफ किया है बॉल को एक्स्ट्रा कवर की तरफ और 2 रन हासिल करेंगे यहाँ पर आरिफ. आरिफ अभी तक खासी इंप्रेसिव नजर आए हैं, पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं था. तो थ्रू आउट द इनिंग्स उस तरह खुल के खेल भी नहीं पाए फैजान. यही अहम होता है कि अगर एक बैटर सेटल हो जाए तो उसको दूसरे एंड से भी सपोर्ट मिले ताकि वो फिर खुल के स्कोर कर सके, वो अपने मसल्स को फ्लैक्स कर सके. अनफॉर्चुनेटली एओ हॉस्पिटल की टीम को वो पार्टनरशिप्स ना मिल सकी कि जो एक बड़ा टोटल लगाने में मददगार साबित हो सकती थी. आखिरी ओवर का खेल जारी है. 5 गेंदें बाकी हैं. अब एओ की कोशिश होगी कि मैक्सिमम जितने रन ऐड कर सके यहां से वो ऐड करें. This time just playing it wide of the short cover fielder. 1 ही रन मिल पाएगा. 26 बॉल्स हो गई हैं अब तक लास्ट बाउंड्री से. यानी 4 ओवर से जायद हो चुका कि बाउंड्री अब तक कंसीड नहीं हुई. 10th ओवर में अब तक कोई बाउंड्री कंसीड नहीं हुई. Imran Randhawa trying to dry the ball as best as he can. पर आरिफ को कनेक्शन जरूर मिले हैं, but every time he's hit it straight to that man towards extra cover. गैप नहीं हासिल कर पाया अब तक. 25 गेंदों पर 23 रन बनाए. खुजैमा अब सामना करेंगे इमरान रंधावा का. आखिरी ओवर जारी है यहाँ पर एओ हॉस्पिटल्स की इनिंग्स का. पूरी इनिंग्स में खुल के खेलने की इजाजत नहीं दी है तरीन एकेडमी के बॉलर्स ने. जबरदस्त डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए नजर आए, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो या स्पिनर्स. प्रेशर एक्सर्ट किए रखा थ्रू आउट द इनिंग्स. बड़ी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग की अब तक. और यहाँ 9वां नुकसान. 9th विकेट डाउन एओ हॉस्पिटल. खुजैमा के पास और कोई चारा भी नहीं था. आखिरी ओवर चल रहा है उनकी बैटिंग इनिंग्स का. He had to go for it, went all out, could not get the connection that he wanted. तो एंड पर लगी बॉल और सीधी लॉन्ग ऑफ के हाथ में. That was an easy catch. सान खान आज काफी मसरूफ रहे फील्डिंग में.
और अपना किरदार बतौर फील्डर भी निभाते जा रहे हैं। बिल्कुल 3 विकेटें भी हासिल की हैं साथ साथ। बगैर कोई रन बनाए खुजैमा कदमों बोझल कदमों के साथ पवेलियन की जानिब गामजन। लास्ट मैन इन आमिर। 2 बॉल ही बाकी है आमिर के पास, अब कम से कम स्कोर 100 तो ले जाए। एक अच्छा शॉट 100 रन की उस पार ले जाएगा इनको, और एक अच्छी बॉल यही इनिंग्स तमाम कर देगी। 100 रन तो बना लेने दे। आमिर ब्रोही सामना करेंगे इमरान रंधावा का। Played with confidence, but straight to the bowler. He caught dot ball. ये आखिरी विकेट। कोशिश की खुजैमा ने कि कुछ रन्स का इजाफा कर पाए अपनी टीम के लिए, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथों में। हसन खान ने कोई गलती नहीं की और बड़े कंफर्टेबली इस कैच को थामा। He is too good a fielder to drop that. Took it easily. Last ball of AO Hospital's innings. और सिर्फ एक रन बन पाया। दूसरे रन लेना चाहते थे आमिर, लेकिन आरिफ ने कहा नहीं, रहने दे, 98 काफी है। It was the last ball. It was the last ball. Should have attempted आप अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, आप विकेट की परवाह वहां करें यहाँ पे। बहरहाल 98 रन 20 ओवर से बना पाई 9 विकेटों के नुकसान पे, तो 99 रन का हदफ मिला है तरीन एकेडमी को ये मैच जीतने के लिए, जो उसकी बैटिंग लाइन को देखते हुए कतई मुश्किल नहीं लग रहा। Having said that, AO Hospitals के पास एक अच्छी bowling lineup है. They will definitely try their level best to make this match as interesting as they possibly can. वो experienced cricketers कहते हैं ना, हमने बना लिए हैं, उनको बनाने हैं। और किसी ने ये भी कहा था कि it's not over until it is over. So कोशिश करेगी एओ की टीम, वो भी तजुर्बाकार साइड है, अच्छी साइड है, रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, एक टीम की तरह खेलते हैं। ये हाइलाइट्स एओ की इनिंग्स की। शुरू से ही अली माजिद ने अपना दोनों ओपनर्स को परेशान किए रखा, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। सोहेल खान showed some impetus there, but he could not carry on. बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश जरूर की गई एओ हॉस्पिटल्स की टीम की जानिब से, बट ज्यादातर फील्डर्स के हाथ में गए। जाकिर मलिक लुक इम्प्रेसिव, बट वो भी इनसाइड एज की वजह से वापस लौटे पवेलियन। उसके बाद भी कोशिश जारी रही। फैसल अकरम was absolutely amazing throughout his spell, just gave away 10 runs, took 2 wickets as well. उसके बाद दीगर बॉलर्स भी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते रहे। दिस इज हाउ द लास्ट वन फेल। ये एओ हॉस्पिटल्स का स्कोर कार्ड। सुहेल 25 रन बनाकर नुमाया रहे, आरिफ 23 रन बनाकर नाकाम शिकस्त रहे, 19 रन जाकिर ने किए और 11 रन जसद ने किए। इनके अलावा कोई भी बैटर इनका डबल फिगर में ना आ सका। सैड काफी सारे डक्स भी मौजूद थे और हसन खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फैसल अकरम ने 2 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें अली माजिद ने, एक विकेट इमरान और शहजाद के हिस्से में आई है। ओवरऑल बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा तरीन एकेडमी की जानिब से। So that's what it is. Tareen Academy need 99 runs to win this match and get their second consecutive win. We'll take a break and we'll come back with live action.
जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल DH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल DH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। में ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान, नियाज स्टेडियम हैदराबाद। पहला एक रोजा मैच। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान किम ह्यूज का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। पाकिस्तान के मुकर्रर करदा 40 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 229 रन। मोहसिन हसन खान की 104 रन की शानदार इनिंग। ऑस्ट्रेलिया के टेरी एल्डरमैन की 2 विकेटें। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम के 9 विकेटों के नुकसान पर 170 रन। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ग्रैम वुड 52 रन के साथ नुमाया स्कोरर। पाकिस्तान की जानिब से जलालुद्दीन की 4 विकेटें। पाकिस्तान ने ये मैच 59 रन से जीत लिया। इस मैच में जलालुद्दीन ने एक रोजा क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक की। That's a better shot. Beautiful shot. More runs here. And back in the ball. Aiming to headbutt the boards. Shot drifting down the leg side. No one out there, free hit. 255 for 4. Four more. Now, if I think back to his maiden Test 100 at the Wacker in Perth, this is the shot that stood out for me. Four more.
Now Stokes will want 2 here. He's back for his second 50 in the match. Oh, squirted away. When you're positive, you have a little bit of fortune. 4 more. High in the air. This has gone a long, long way. But look out in the stands. Oh, takes him on again. High in the air. Gets away with it. It's over the keeper. Lively in the crowd. 20 from the over. 3:31 for 4. Oh, he's got that. Oh, he's nailed this. Driven down the ground. Beautiful timing. 4 more. Terrific, isn't it? Absolutely box office. Oh, beauty. Absolute beauty down the ground. 99. Welcome back once again, this time for the run chase of this match number 8 of Maple Leaf HD 38 Corporate T20 Cup powered by Parkview City। अब से आपने कुछ ही देर पहले देखा कि एओ हॉस्पिटल जिन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया था, सिर्फ अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में 98 ही रन्स बना सके और एक शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया यहाँ पे तरीन अकेडमी ने, जो कि काफी करीब हैं अपना दूसरा मैच जीतने के। एक वक्त ऐसा लग रहा था जब जाकिर मलिक और सुहेल खान क्रीज से मौजूद थे और अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे बैटिंग पावर प्ले का, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का। ऐसा लग रहा था कि 140-150 रन से करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हसन खान ने की, कासिम अकरम ने की और अली ने जिस तरह की स्टार्ट प्रोवाइड किया, किसी भी तरह से मैच में वापस नहीं आने दिया यहाँ पे एओ हॉस्पिटल्स को। अब देखना यह है क्या ये छोटा सा टोटल रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे यहाँ पे एओ हॉस्पिटल्स, और विल तरीन अकेडमी मैनेज टू चेज दिस डाउन just like the way they did last night when they were facing Neha Fashion. AO Hospitals are already out there in the center. We are still waiting for the openers of Tareen Academy. It just took them 3.5 overs last night to chase down a target of 62 runs. They are yet again chasing a low score tonight. Tareen Academy batters. I've been joined with Sikandar Bakt alongside me in the commentary box. Sikandar Bhai, what do you see? What do you think? How much overs will they need to chase down this target? Well, it's all depend how AO Clinic plays this game. And as I told you earlier, when you have a very small total, 99, they have to score in 120 balls, which is nothing. As compared to T20 cricket, it's not a big score. So you have to attack. Now let's see how Khalid Latif deal with this match. I told you earlier when in the previous match, Neha Fabrics, they did not attack at all. They left the whole ground open for the batsman. When you have a small total, you must attack. Try to get the wickets. जी हाँ सिकंदर भाई, दोनों ही मैचेस लो स्कोरिंग देखने को मिले। हमने पहले मैच में देखा नेहा फैब्रिक्स सिर्फ 101 रन बना सके और एओ हॉस्पिटल्स को ने आज सिर्फ 98 ही रन्स बनाए हैं अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में। Although they have got much better bowling lineup, they have got the likes of Amir Pirohi who picked up 4 wickets in the previous game. They have got Afnan Khan who has represented Pakistan in under 19 level. Amir Azmat is going to be opening the batting for Tareen Academy. They did not lose any wicket in the previous game when they were chasing down 62 runs and then chased down the target inside 4 overs, and his partner is going to be Mohammad Shehzad. And as we expected, right arm fast bowler Amir Pirohi is going to take the new ball. He picked up 4 wickets. He was very lethal with those Yorkers. Amir took all 4 wickets with those Yorkers. It's going to be really important for him to provide a good start to his team. Khalid Latif has all the experience. Obviously, we will see some better field placement, some better strategy as compared to Neha Fabrics. Amir Pirohi is going to start the proceeding from the creek vista hand. He has taken the fielder at first slip. A fielder down at third man.
And the fielder at deep square leg, and he's all set for the ball number 1 in this run chase. Starts off with a good swinging delivery, nicely driven on the offside. Well, there was a swing, without any doubt. Amir first ball, there was a little bit of away swing. Now he has a slip, which is good. A proper third man, good. Because if he goes for a big shot, he might get an edge and goes towards the third man area, as you can see on the left side of you. They must have fielders saving one and let the batsman play some shots, unnecessary shots. See, that was a good ball again. Moved away and went into the slip area. Why not another slip? There is no harm because you just have 99 runs. There is no harm in it. The bowler bowled 2 good deliveries. Look at that ball. See, there is a movement. Exactly, Sikandar Bhai. The movement is already here. It all depends how he can use this movement to his effect. Punching off the back foot. Finds the gap on the offside. The third man is after it. Excellent running between the wickets. That is something we did not see from AO Hospitals in the first innings. They were either relying on boundaries or we are witnessing dot balls. And we have mentioned it time and time again that singles and doubles are as valuable as boundaries. It was Asad who was standing there at backward of point and he should have stopped it. In the end, they got an easy couple to get up the mark with. See, the ball is moving. The bowler Brohi should keep the ball a little bit within the stump and a little bit up. It's a very good length. Drifting on the pads. The throw is at the bowler's end. We'll have to check for the umpire's signal. Leg byes. Signal by the on-field umpire. A very good single. There's a good cricket from the batsman too. A little bit away, wavered length by the bowler Brohi, but the batsmen were very quick, running between the wicket. They took a very good single. They should not miss anything. They should not relax rather, because the total is not big. That's a good delivery. That's the right channel. Once again, the ball moved. Zishan, did you see that? A little bit of movement. Away movement, which is good. Now he has to find a good line. Slip is there. Why not a gully? There is a fielder at the backward point. Then is a point. A little bit towards a deep gully, I will call it. Cover and extra cover. Well, they can also afford to have another fielder very close to the bat at extra cover. Invite the batter to go for that drive. Once again, drifting on the pads. Sohail Khan just couldn't collect it. That has gone fine, and that is going to go past the boundary ropes. Another leg by is signaled by the on-field umpire, but as we all know, they all count. A little wayward he has been so far, Amir. Previously, he was bowling well outside the Austin. This time again, drifting onto the bat. Sohail Khan not being able to pick it up cleanly. With the fine leg inside the inner ring, the ball was definitely going to go past the boundary rope. So 7 for none after first over. Ali Tareen, in fact, sitting in the dugout with his side. It's always a good sign when the owner himself is out here supporting his team. Sometimes it's put pressure on the team. It can be a negative point too. Well, if he has I'm sorry, I have to pass that comment. If he had an assignment, like if he's the one who's coaching or doing something like discussing the strategy or something like that, so he should be there. Otherwise, he should stay away from the boys because it's put extra pressure. Because I have been with the team many times, and when you have your big official sitting with you, it creates unnecessary pressure. Let the boy be relaxed. Asad has now been given the ball to bowl the second over. If we can look at the field placements, all the fielders inside the inner ring on the offside, a fielder at deep mid wicket and a fielder at long on. Once again, playing it with soft hands and straight away getting off the mark with that single. That's good running between the wickets already. Asad, he unfortunately couldn't pick up a wicket in the previous game, but
Still bowled with a decent line in length, went for just 23 runs in a spell. It's all about wickets, Sikandar bhai. If they can manage to pick a few wickets at this stage, only then they will have a chance to come back. Once again, slightly shorter in length. He has placed that away on the offside. He got a hand to it. The fielder at extra cover. Slowed down the pace of that shot. Still a couple taken by the right-hander. They cannot afford to give away easy runs like that. Well, so far the batsmen are playing very sensible, keeping the ball, hitting the ball all over the ground, not in the air, so they are pretty safe over there. Coming down the track, hitting it straight back past the bowler. The ball goes to mid-off. The throw is at the wicket-keeper's end, and tell you what, could have been tight. Khalid Latif, on the other hand, is complaining. He might have expecting the throw at the bowler's end. But he did the right thing, I think, because the batter was coming down the track, so obviously he would have reached the bowler's end much more early. Even the non-striker's end was comfortably back inside the crease at the right time. Actually, the call was of the batsman who hit the ball. He was going towards the non-striker end, and that is the area was supposed to hit. Just defending that ball. काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है अब पूल बी की अगर हम बात करें, क्योंकि Tareen Academy, obviously it's going to be a miracle if they lose this game, because 99 runs is not a big total by any stretch of imagination. If they go on to win this game, Tareen Academy, then AO Hospitals, big appeal, that has wrapped on the pads and the finger does not go up. Wow, that looked pretty close. This reaction there from the bowler clearly suggests that looked pretty plumb, and it has been signaled as leg by, so there was no bat involved. See, the leg stump was a little bit visible, so there was a previous leg before where I think you mentioned it, the leg stump was visible. Ali Manzoor, the captain of Neha Fabrics, in the first game. That means he was hit in the middle of the stump. Well, that looked pretty close to the naked eye, but the umpire had another idea. 12 for none after 2. हम क्वालिफिकेशन सिनेरियोस की बात कर रहे थे. अगर तरीन एकेडमी आज का मैच जीत जाती है, एंड इफ दे गो ऑन टू विन द नेक्स्ट गेम एज वेल अगेंस्ट नेहा फैब्रिक्स, देन दे विल ऑब्वियसली टॉप द ग्रुप. और AO Hospitals or Moment Seeds then will have one victory in the group stages. So it's important for AO Hospitals that they stretch this game as far as possible और उनकी नेट रन रेट पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े आज के मैच. लेकिन अगर मैच को एंड तक लेके जाना है तो जरूरी है कि विकेट्स यहाँ पे हासिल की जाएं. Pick up shot on the leg stump. Really good strike this from Amir. I think the ball landed just before the boundary road, but still he'll get the desired result. That was a bad line. As I told you earlier, that it has to pitch right on the offside because there was a little bit of movement, but sometimes the bowler thinks because the ball is moving away from the batsman, so let's bowl from the middle stump or from the leg stump. And that's what he did over here. And a very good shot by the batsman. Very good shot. Yeah, it was a very good shot indeed. Safe shot as well because the fine leg fielder was inside the inner ring. Amir also is a talent to watch out for in this tournament. He batted sensibly, he batted aggressively in the game against Neha Fabrics. Slightly shorter in length, pulling it away on the onside. Amir, on the other hand, bowled exceptionally well against the left-handers in the previous game when he was able to bring the ball back into the left-handed batter. So far, his line has been a little wavered, if you can say, against the right-handers. He's not being able to pitch the ball in the right channel, although he's getting the movement, but the place where he's landing it needs to be a little more wider outside the off stump. Or maybe try to swing the ball away by pitching it out on stump and then making the batter to go for that drive. Especially when you have taken the fielder at first slip. There you see Zakir Malik standing there at mid-off. Zakir Malik had such a good start. He collected 2 boundaries and then went for a big one again.
And after his dismissal, it all went downhill for AO Hospitals. Slightly short of hitting it straight to the fielder at mid-off. Once again, getting that single. Even if they're hitting the ball straight to the fielders, they are still going for those runs. And the batsmen are timing the ball very well. This shot too, the batsman Shahzad timed it very well. The sound of the shot was very good. It shows the timing. It was from the middle of the bat. Straight down the ground. Couldn't beat mid-off. Good running. This is good running between the wicket. Good understanding. That means they have been playing together for some time. Yeah, it shows that they have got good game awareness as well. Two sides that have impressed us a lot throughout this tournament is Umar Associates and Tareen Academy. See, every batsman must know the danger area. And whoever is calling is running towards the danger area. Then the other batsman should respond. Very good run again. Played with a soft hand and a quick single. 3 singles have been collected in that similar region on the leg side, and still we haven't seen any fielder moving towards mid-wicket. That space is pretty vacant. They just have a fielder at fine leg inside the inner ring and a fielder at mid-on. And look at that huge gap. Well, you asked for it. The slip has been removed. Adil Latif is coming towards the short mid-wicket area. Well, Brohi is not bowling to a proper line. Otherwise, seems to be sharp. But he has to learn a lot. Good delivery. Well, he looks sharp. Without any doubt, he's looking sharp. 3 overs are gone, 20 without loss. Defence Housing Authority Phase 8 right next to this wonderful cricket stadium, DHS Sports Club. And as they all say, the city of lights, shining bright. Karachi is the best possible place to play Ramadan cricket. Because of the weather as well, Sikandar bhai, you can play cricket throughout the year. Yeah, not in the June July time. June July is a bit more moisture in the air. Some turn and bounce for Asad. Recently we saw a tournament being played in Lahore as well. Just before this tournament, but few matches were washed out because of the rain. So obviously that is the reason why even cricketers prefer coming in this part of the country and play their cricket. They've got such lovely facilities here at DHS Sports Club. And it's good that the tournament is happening after a gap of 3 years. Driving on the offside. Once again, it has been misfielded there by the fielder at extra cover. And once again, another couple taken by Shahzad. Well, misfielding will not serve the cause. They have to stop singles. See, another single has been given. Another 2 runs. So they have to be sharp if they want to fight back. Swept it away on the leg side. Behind square, the fielder at short fine leg is after it. How easily have they been able to find the gap so far? As if they know that each and every player is standing in the field. Whenever the ball has pitched on middle and leg stump, they have managed to sweep it away on the leg side. And whenever the ball has pitched outside the off stump, they have managed to play that cut shot. And they have been helped by some misfielding effort from the fielders as well. Too short. It was asking to be hit. And Shahzad absolutely punished that. And rightly so, the ball went past the boundary ropes. It deserved to be hit. It was a half tracker outside the off stump. Well,
एओ की जो बॉलिंग है उसमें इतना एक्सपीरियंस नजर नहीं आता। ये भी गेंद देखें ना, लेफ्ट आर्म, ये स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। श्याम खान बहुत जबरदस्त बॉल कर रहा था, उसका गेंद पड़ के बड़ा बड़ा स्पिन हो रहा था, तो उसका मतलब है स्पिन है अगर आप करना चाहें तो। मगर अगर आप शॉर्ट गेंद कर दें, ऑफ स्टंप कर दें और शॉर्ट वो भी स्पिनर, तो उसको तो फिर पिटाई होनी है। तो एनीवे ये बच्चे सारे सीख रहे हैं। आई होप कि इस टूर्नामेंट के बाद उन्हें कुछ सीखने को मिल चुका हो, एक्सपीरियंस हुआ हो उन्हें। Giving himself room, hitting it down the ground. Very well done, very well done. Hosama is standing there at mid-off. बहुत आला boy. Yeah, सिकंदर भाई, conditions तो आपके लिए favorable हैं, pitch भी आपको offer कर रही है assistance, but all you need to do, Dr. Junaid Ali Shah examining one of the kids in the VIP box. Not only he's a very qualified doctor, but he's a very big fan of this sport. 4 done, 28 for none. Not only you can watch some quality cricket, but with Sir Junaid being here, you can also get some regular checkups. Well, Junaid Ali's father, late Muhammad Ali Shah, was a great fan of cricket and was a good friend of mine. We all miss him a lot. May he rest in peace. और वो भी इसी तरह जहाँ पर भी रास्ते में, सड़क पे, ग्राउंड में कोई अगर आ जाता तो फौरन उसको एंटरटेन करते थे। अब इससे बड़ा मतलब मैंने नरम दिल आदमी मैंने मेरी नज़रों से नहीं गुजरा जो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनका हॉस्पिटल, और मैं उनसे जब मिला था पहली दफ़ा, जब उन्होंने एओ क्लिनिक के लिए घर ख़रीदा था, मुझे लेकर गए थे। बहुत ही अच्छे शख्स, बहुत ही मिलनसार, रहमदिल आदमी थे। और कहते हैं ना कि अच्छे लोग शायद जल्दी चले जाते हैं, तो ये दोनों बच्चे मेरे सामने बहुत छोटे थे, जिसे कहना कि पैम्पर्स में मैंने इनको देखा है भाई, और ये अब माशाल्लाह से ये भी अब इसी तरह सबकी खिदमत कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। He was a wonderful character. I have heard so many stories about him. Even the Asghar Ali Shah Cricket Stadium. Initially, the Ramzan cricket tournament used to happen there. Now the players have this facility here at DHS Sports Club. मगर आपने अब असगर अली शाह का जिक्र कर दिया है, तो असगर अली शाह ग्राउंड एक्चुअली हमारा ग्राउंड था। जब मैं छोटा था, 10-12 साल का, तो हम वहीं खेलते थे। जब मैं टेस्ट क्रिकेटर बन के वहाँ से निकल गया, मोइन खान का घर मेरे घर के पीछे था, हम सब वहाँ खेलते थे। उसके बाद जब मैं टेस्ट क्रिकेटर बन गया था, शाह साहब ने ग्राउंड को ले लिया, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया। It's short, hit over mid-on, one bounce into the fence. They want to finish the job themselves, both these openers of Tareen Academy. Lal Kumar again doing exactly the similar mistake which Asad was doing from the other end, dropping it short. You need to be bowling it fuller, sir. Let that ball turn. Because if you're going to bowl at that length, you are asking for trouble, especially against these talented openers of Tareen Academy. Drilling it down the ground. आमिर भी बहुत अच्छा शॉट्स खेलें, टाइमिंग अच्छी है। देखिए फर्क है बॉलिंग का। एक तरफ हसाम बॉल करा रहे थे और उनका बॉल पड़ रहा था, ब्रेक हो रहा था, तो बड़ी अच्छी लाइन पे फ्लाइट के साथ। तो यहाँ पे ये बच्चा जो अभी नया सीख रहा है, उसका इतना अच्छा फ्लाइट उसको नहीं मिल रहा। Once again tried to thread that gap on the offside, but this time it was Afnan Khan standing there at cover, and we all know how talented he is. I was surprised Afnan Khan was not given the ball in this batting power play. देखिए इस पिच पे टर्न तो है, मैंने और आपने देख लिया। अब ये बच्चा बेचारा अभी पिछले के ये नया है, सीख रहा है, अभी तक उसको ग्रिप नहीं है। हसाम खान बहुत सीजन्ड है, तो वो अच्छी तरह यूटिलाइज कर गया। Using his wrists, playing it towards long on, another single taken. If you compare their score to AO Hospital's score, yes, AO Hospital lost an early wicket, but even they were going at a very good rate during the batting power play, but just a rare shot by Zakir Malik, and that opened the floodgates. They never really recovered after that. Even Khalid Latif
could not score runs here tonight. Much better ball. 5 runs coming in that opening over of Lal Kumar. After 5, it's 33 for none. Just like we expected, Afnan Khan has now been introduced into the attack, so Khalid Latif is trying all his options. Afnan Khan, who represented Pakistan at under 19 level, he was also part of Pakistan Junior League, which happened last year. Another left-arm orthodox, Afnan Khan, a very tall left-arm spinner, has been given the responsibility to bowl this last over of the batting power play. Not only he's a very good bowler, but he's a very good fielder as well, Afnan Khan. Coming down the track, hitting it up and over, extra cover. What a shot this is! My goodness, that has travelled all the way for 6. This is some shot. We have seen some extraordinary shots from Nafe in the previous matches, but this one also being one of the best of them. Just charged the bowler there. Kadam aage badhaya and hit it straight. The ball went flat. Got a maximum. ये दो टीमें अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रही हैं जीशान. कोई कंपैरिजन नहीं है दूसरी टीमों का और इनका. इनके बैट्समैन आप देखें, इनकी अप्रोच आप देखें, इनकी एग्जीक्यूशन आप देखें. ऐसा लग नहीं रहा कि सेम पिच में मैच हो रहा है. Too short, too wide, asking to be hit, and he has been punished yet again, Afnan. Oh my goodness, that ball is stopping. It's going to be touch and go. I think it's much more tight than we anticipate, because by the time he was pulling the ball back, his leg might have touched the boundary cushions there. The umpire will definitely check with the third umpire there. He did well, did really well, but to no avail. That will be given 4. His legs got a connection with the side skirting. Yeah, that shot deserved a boundary as well. Once again, the batter preferring the longest side of the ground, and he's still being able to clear the field. He's displaying some immaculate timing, Zishan. Fourth umpire is going to check that again. Clearly, his boot was touching one of the Toblerones when he was looking to pull that ball back in the field. I think it was Asad who was diving to save that boundary. You can clearly see his left leg touching the Toblerones and his right leg also over the boundary ropes. Yes, it has been signaled as a boundary, rightly so. That's the beauty of having technology. Finally, we thought that would never come. 6 and a 4. What is Amir going to do on this one? Dragged his leg slightly shorter. He looks like a proper batsman, doesn't he, Zishan? I have been really impressed by the way Tareen Academy have managed to play these 2 games. And just like you were mentioning, and just before this game, they were looking so happy. They were looking so involved as a unit. They've got perfect combinations. They've got really good bowlers. And as the captain mentioned, they've got some real good batting strength. It's all about having the right attitude as a unit, Zishan. And they were displaying all the right spices, all the right ingredients that a team needs to do well. Well, now he has taken off the helmet. Shehzad, he also bowled really well in the first innings. He got that big wicket of Akhtar, and now he has swept that. It has gone high up in the air. It's going to land in no man's land. Lal Kumar is after it. He's going to get another couple. So even the luck is favouring now Tareen Academy. After 6, it's 46 without loss. Afnan going for 13 in his first over. Amir and Shehzad opening
the batting for Tareen Academy and doing exactly what the doctor ordered for them. 25 for Amir, 15 for Shahzad. They will be looking to score the total themselves. And exactly how it should be. Yeah, when they're in good form, they're utilizing that. They know they have the confidence in them. They chased down the target in the previous game as well. And that's what happens. Even when you're chasing a low target, you need to break those down into smaller targets yourself. You need to make sure, you need to plan before that which strategy you are going to apply, how many runs you need to score during the batting power play without losing any wickets. Once again, sensibly played on the leg side, as if they know where the fielders are placed. Once again, he saw no fielder at mid-wicket. He just gently played it on the leg side, although Lal Kumar went after it himself. But once again, it was an easy single on offer. Amir using his wrists there for one. He looks impressive. Continues to impress even more. Running the first one hard. Will they come back for the second one? Yes, they are. Yes, they are. Excellent running between the wickets. Although the fielder has managed to throw the stumps directly, and guess what? They are going to collect yet another run on the overthrow. This is what happens, Ishan, when you apply pressure on the fielding side. As they say, follow the basics. They ran the first one like someone was after them and managed to take the second one as well. Getting an error from the fielder and getting another run as a reward. Yeah, Lal Kumar has so much experience. He should have been standing behind the stumps collecting that throw. Instead, he let that ball go and hit the stumps. The ball ricocheted off the stumps and they collected yet another extra run. So they are making it simpler for Tareen Academy themselves. Just 49 runs needed. 50 runs already on the board. I think it's the highest opening partnership in the tournament. Swept that fine. Some more work to do by the fielder at deep square leg. Another couple. The range of shots Amir has displayed is just amazing, Zishan. He's played straight, he's swept the ball well, he's cut the ball well, he's driven the ball well. He is so talented. 360-degree player? For sure. Once again, forcing it on the back foot towards long on. This is high quality batting. Without taking any more risks, they have easily managed to score 7 runs of the over. और यही situation की demand है, Zishan. They don't need to go too hard at it. All they need is less than a run a ball. In fact, at 3.45 rate. Lal Kumar using the towel to dry the seam of that ball, but I don't think even that's going to work. On the offside. There is protection out there in the deep. Once again, 2 runs taken. They have given importance to running between the wickets as much as to the boundaries that they have collected. Once again, you could see Shahzad closing the face of the bat, guiding the ball just wide of that extra cover fielder, allowing him to go for the second run as well. This is very smart cricket from Tareen Academy and both these openers. I won't be surprised if Tareen Academy faces Umar Associates in the final. Good piece of wicket keeping there. Touch of MS Dhoni. Too early to say that. Well, he used his right leg to stop that ball. Meanwhile, a dot ball to end the over with 55 for none after 7. AO Hospitals की टीम ने आज लाल कुमार को टीम में इंडक्ट किया था to add that extra spinner. He hasn't done too well till now. AO Hospital could score only 98 in the allotted 20 overs. Tareen Academy doing very well till now. Just 44 needed of 78 deliveries.
Anish, the reason why we are witnessing low-scoring games is because of the mindset as well. I think the teams are watching the previous matches. They are considered that the pitch is difficult to score 130 runs on the board. So if we score that much, it will be enough. But if you score, even if you aim for 100%, you end up achieving 90%. So why just take the pitch out of the equation? Just go on your strength, just like the way Umar Associates did last night. And all Tareen Academy have done here is play proper cricket. They haven't gone for rash shots. They haven't tried to do anything out of the blue. They've driven well, they've swept well. So they're sticking to their basics and they're being rewarded. That's all you need to do. And they were on top of the game during the batting power play when Sohail Khan and Zakir Malik were batting. I mean, Zakir Malik was going after Ali Majid, who has been the most successful bowler for Tareen Academy. All he needed to do was to stay there. It's your presence that counts more. What bewilders me is if batsman gets 2 boundaries and then goes for a third one as well, that's just asking for too much. That's letting excitement take over. It's Khuzaima bin Tanveer who has now been introduced into the bowling attack. Knocked him over of the very first ball. Touch unlucky there, Amir. He was looking to force that ball away on the offside, getting an inside edge and the ball hitting the off stump. Finally something to cheer about for AO Hospitals. I guess he tried to force it a bit too much. He had the room. He has displayed the ability to play that shot. But good start for Khuzaima. Yeah, wonderful start indeed. 29 runs to his name for Amir. It's 55 for 1. Not happy there, Amir, with the way he got out. He was looking so good. So Tareen Academy are now 55 for 1 in 7.1 overs. Amir out for 29 of 26 deliveries. Well, full marks to Khalid Latif. At least he's trying all his options. At least he's trying to bring his team back into this game. Waqar Hussain coming in. I was hoping to see Sharoon Siraj. That's why he got dismissed, Amir. Although he's a pretty tall batter, but the ball might not have bounced as much as he anticipated. It came in a nudge as well. Yeah, Khuzaima bin Tanveer does have this ability of seaming the ball. Once again, a shorter length delivery, nicely played on the onside by Waqar. Ye hoti hai cricket, Zishan, honestly speaking. A new batter comes in, realizes the situation. There is a set batter on the non-striker end. You just punch the ball for a single. Get on the non-striker end. Settle your nerves. They have done their homework all right before coming into this tournament, that is for sure. And they have assessed the conditions as well. I don't think much players have played cricket on this ground from Tareen Academy. Good Yorker. Impressive stuff by Khuzaima there, and you don't expect any less from Mohammad Wasim as well. He is the coach for Northern Association. We've known him for picking youngsters. I was well defended. But he's taught them well, really well. Well, he looks slow, young. I think he can himself come out and play for his side. Shorter in length. Tell you what, that was close to the outside edge. A bit of chin music maybe from Khuzaima. Khuzaima is changing it up beautifully here. This one banged in shot, cramping him for room. Before that, he was bowling within the wickets. Well, almost. And even Sohail Khan behind the stumps liked that. Well, they don't have many runs to play with. At least they can try a few options. Just think out of the box. Try different things. Who knows? 1 wicket or more. Might have been a slower off cutter this time outside the off stump. Just fiddling outside the off stump there, Shahzad. He realized that instantly. A lot of kids present here.
Earlier she was being examined by Dr. Junaid Ali. This is the beauty of this facility. Not only seniors, but even the youngsters, the juniors, the kids can come here and enjoy cricket. That too without paying a penny. Driven on the offside. This was Khalid Latif, the captain himself, standing there at extra cover. He might have hurt himself there in stopping that ball. What a wonderful over that was from Khuzaima, giving away just 2 runs, getting a wicket as well after 8. It's 57 for 1. It really is a wonderful facility indeed. Even when the teams who are participating, all the franchises, when they play their matches in Karachi, they usually come here for the practice games. निशान मैं सोच रहा था अगर इन्हीं 8 टीमों में से अगर आप एक 11 की टीम बनाए तो कैसी तगड़ी तीखी टीम बनेगी. You can count on that team to win your matches. Yeah, exactly. There is so much talent on offer. It's a wonderful opportunity for them to showcase that. And not only you get a chance to, showcase your talent, you get a chance to share the dressing room alongside international cricketers, and you get so much to learn from them on the field and off the field as well. Sweeping it away. Ball goes straight to Khuzaima, standing there at deep square leg. Sweeping with confidence and getting 1. Kept his balance. Again, इस किस्म की एबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है ज़ीशान, ताकि आप अपने आप को सिचुएशन से निकाल सकें, प्रेशर हटा सकें. Well, that came from the bat. Did not know what they were appealing for. Just trying to create unnecessary pressure on the on-field umpire, maybe. Or the batsman even. Bowlers do tend to play these mind games. Kudos to Ali Tareen as well, who runs a tight ship. He's so passionate about the game of cricket, always promoting young talent, whether it's from Tareen Academy or anywhere else. Down the wicket he comes. He has hit that straight. He has hit that flat. He has hit that all the way into the dugout. Brilliant connection on that occasion from Shehzad. He was being beaten in the previous over by Khuzaima, but this time as soon as he saw the spinner, that length, that line, he came down the track and dismissed that ball out of his sights. Well, we didn't see this kind of a batting display all night long. We had to wait for Tareen Academy's batsmen to show us how it's done. They're doing just that. This is beautiful batting. 8 already off the over. Yeah, when Tareen Academy are batting, entertainment is guaranteed. Sweeping it away. Sweeping it fine. Just couldn't find the gap. He's disgusted. He wanted a boundary on that shot. Shehzad. Shows you what Shehzad is made up of. Never happy with what he's done. Still showing signs of a good talent. 2 sounds maybe, might have been an inside edge, but good delivery nevertheless. Yeah, talking about Shehzad. Although he lost his partner, but he has still been able to dominate. This time it's Waqar who comes down the track, hitting it towards Lal Kumar at long gone. The ball hitting the stumps directly. How well have Tareen Academy batters used their feet? They've negated spin on so many occasions. After 9, it's 67 for 1. Five bowlers have been used so far from AO Hospitals. Just a wicket which has been picked by Khuzaima. And all the 4 bowlers are still waiting for their first wicket of the game. They got off to a wonderful start. The opening partnership of 55 runs between Amir and Shehzad. And when you get a good partnership early on in your innings, it becomes much more simpler
when chasing down the target. Something that we haven't seen from the other teams. Good effort, really good effort this Hosema. So one thing opponents have done wrong against Tareen Academy is that they've won the toss and they've always batted first. You need to throw a side like that into action and put pressure on them to get a positive result for yourself. Yeah, even in international cricket, we see teams prefer chasing in this format of the game, because when you bowl first and when you're chasing in the second innings, at least you have a target, you have a mindset how to approach. Slightly shorter. Again, pulled it on the leg side for a single. Because when you know the nature of the pitch, you know the pitch is going to get slower and lower. Why not ask the team to bat first? It's a T20 format of the game. The pitch doesn't usually change that much in the second innings. It's not test match cricket when the pitch is going to behave a little differently in the other session or the other day. What has changed, however, is the approach that Tareen Academy brings to the table. Yes, other teams should learn how the way they have batted, how the way they have chased it down. Oh, wonderful slower one. He was completely deceived by the lack of pace on that ball. He's giving himself tough time, Hosema. Hosema is definitely making his presence felt there, tricking a well-set batter. Shehzad is already on 29. People missing Shahnawaz Dahani there. Yeah, would have been a wonderful thing if he would have been part of this tournament, but I think he's having some injury issues maybe. Slightly short, slapped down the ground all the way for 4. A bit of tennis shot on that. But Hosema should not be discouraged by that shot. That shot came out of frustration because Ahmed was looking to bludgeon that ball. However, he never looked like he lost control. He was always in control of that shot. He saw that it was short, went at it straight. The equation now gets even simpler. Just 27 more runs needed. Loads and loads of over remaining. Full toss. Carved away over back for a point. There's going to be yet another boundary. The umpires might have to check that whether it was a waist high no ball or not. Yeah, definitely the on-field umpire is going to confirm that. But a desired result nevertheless. Shehzad gave himself some room there, which allowed him to play it so fine. That's definitely high enough. Yeah, he's pretty tall there. Still, the ball was clearly over his waistline. And still he was able to force that ball in that region. Shows the talent of the batter. Helped his cause by giving himself room. Already 9 of the over. I tell you what, he might have the license to go for it yet again. If this turns out to be a no ball, it's going to be a free hit. I'd like to see what Shehzad does when he gets a free hit, when he gets the license to do whatever he wants. Just checking the length on that. Definitely. Clearly. The time when the ball made connection with the bat, he was almost near to his shoulder height there. Yeah, probably it got higher after it left the bat. You cannot blame the batter for that. Yeah, got a toppish edge. Shehzad looks happy. I wonder if they have checked that no ball during that game between India and Pakistan when Kohli was batting and Nawaz was bowling the final over. And that was a spinner. This is the pacer. Spinners still get some benefit of doubt. And that wasn't a no ball, was it? Yeah, Kohli was batting so much outside his crease there. And it wasn't even signaled by the leg umpire. Kohli straight away signaled it to the umpire and then he went to the third umpire to check that. So apologies to all the Indian fans out there, but facts are facts. So it's a free hit.
A slower one, slapping it down the ground towards mid-off. Wonderful running between the wickets yet again. How well have they done that throughout this innings? Just doing the basics right and performing extremely well. It was a slower delivery, back of the hand slower delivery. Yeah, good execution of slower one. It's another weapon which the fast bowlers have these days to deceive the batter. Slightly shorter. Still getting on top of it, Waqar, getting yet another single towards long on. Slightly expensive over comes to an end from Khuzaima. 12 runs off it. After 10, it's 79 for 1. $79 for 1. AO Hospitals again winning the toss. Khalid Latif deciding to bat first, and they were bundled out for just 98 runs in their allotted 20 overs. And in reply, Tareen Academy have been all over AO Hospitals, just needing 20 more runs to win. They have got 10 overs remaining. They have got 9 wickets in hand. Should be a walk in the park from here on for Tareen Academy. Khalid Latif still busy bringing changes in the bowling attack. It's going to be Asad, the left-arm orthodox, yet again. Down the wicket he comes, hitting it over extra cover. Has he found a gap? He definitely has. They now want to finish this in a hurry, both these batters. I've been joined with Hazan Lakhani alongside me in the commentary box. हसान भाई ज्यादा देर आपको कमेंट्री नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे लगता है 2-3 ओवर्स का ही खेल बाकी रह गया. अगर ऐसा ही हो तो अच्छा है. बट अनदर लो स्कोरिंग गेम. 59 गेंदों पर सिर्फ 16 रन दरकार. अब हार्डली सीम्स के 3 ओवर के अंदर अंदर ही ये हो जाएंगे. जिस तरह शहजाद अच्छी फॉर्म में, वकार भी अच्छे बैटर हैं. अपने कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन के सीधे हाथ पे खेला है और सिर्फ एक ही रन यहां मिल सकेगा वकार को. बाउंड्रीज तो हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करें तो काफी कम टीम्स हैं जिन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स को फौकियत दी है इस टूर्नामेंट में. अगर हम तरीन अकेडमी की बात करें और अगर दूसरी टीम हमारे दिमाग में आती है तो वो उमर एसोसिएट्स हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. या अगर तीसरी टीम इसके आगे भी चले जाए तो इशाल एसोसिएट्स की टीम है. इन 3 टीमों में जो एक प्रोफेशनलिज्म की झलक नजर आती है वो दीगर टीमों में इस लेवल की नजर नहीं आती. ऑल्दो दीगर टीमें भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि दीगर टीमों को हम डिस्क्रेडिट कर रहे हैं. यही फर्क होता है जब आपकी डगआउट में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मौजूद हों और क्योंकि उनके पास इतना तजुर्बा होता है कि ना वो खुद खेलते हैं और अपने खेलने के तरीके से और आपको डगआउट में बैठ के भी ऐसे मैसेजेस देते रहते हैं, ऐसे टिप्स देते रहते हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होती हैं. एक और कंफर्टेबल सिंगल यहाँ पर. स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन. 11वें ओवर का खेल जारी. और आप बात जो कर रहे थे शिशान, अगर तरीन अकेडमी की बात करें तो उनका कोचिंग स्टाफ भी बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है. पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर जो नॉर्दर्न के कोच भी रहे, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम उनके साथ मौजूद है. उनका अपना तजुर्बा है, मॉडर्न डे क्रिकेट को बड़ा वो फरोग देते हैं, तो उसका असर तो पड़ता ही है. जी हाँ, और उनके सिलेक्शन डेज में भी हमने देखा कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को काफी फौकियत देते हैं. और इस टूर्नामेंट में भी हमें नजर आ रहा है जिस तरह की वो टीम लेके आए हैं, जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ ये लड़के खेल रहे हैं, तो ऐसा यकीनी तौर पे लगता है कि फाइनल तो तरीन अकेडमी ही खेलेगी. देखिए अब जिस तरह आज के मैच की पोजीशन है या जिस तरह कन्विंसिंग है उन्होंने पिछला मैच जीता, तो डेफिनेटली पॉइंट के टेबल टॉपर्स हो जाएंगे ये. जी हाँ, अगर अपने तीनों मैचेस जीतने में कामयाब होते हैं तरीन अकेडमी तो बाकी 2 टीम्स के लिए मुश्किलात होंगी. 11 ओवर्स के इख्तिताम पे 86, 1 विकेट के नुकसान पे.
Just 13 more runs to win. 9 overs remaining. Waqar is on strike. Khuzaima is going to continue with his third over. Slightly short, driven on the offside. Stand and deliver. This is one of the best shots of the night. No doubt about it. खूबसूरती के साथ इनको बाउंड्री लाइन की तरफ गामजन किया और अपनी टीम को फतह के और करीब ले गए. बहुत ही खूबसूरत दिलकश शॉट. जी हाँ, इतना बड़ा गैप था नहीं एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से, लेकिन थोड़ी लेंथ शॉट थी और खड़े खड़े खेल के दिया वहां पे. और तो वकार पिछले मैच में बैटिंग करने आए नहीं थे, उनको मौका ही नहीं मिला था क्योंकि 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अपनी फॉर्म भरपूर दिखा रहे हैं यहाँ पे. आज पहली बार हुआ है कि कोई विकेट गिरी है तरीन एकेडमी की इस टूर्नामेंट में. जी हाँ, काफी खुशाइन दिन है इवन नेहा फैब्रिक्स के लिए, क्योंकि आज उन्होंने अपनी टूर्नामेंट की पहली विकेट हासिल की थी. लेकिन कामयाबी से अब भी कोस दूर. आज पहले से बेहतर परफॉर्म जरूर किया, लेकिन इतना बेहतर ना था कि जीत दिलवा सके. यहाँ कोशिश करेंगे कि आखिरी मैच में जीतें और अपना टूर्नामेंट हाई नोट पे एंड करें नेहा फैब्रिक्स. लेकिन इसी तरह के टूर्नामेंट्स में यंगस्टर्स को सीखने का मौका मिलता है. देखिए जिशान, अहम बात यहाँ पर यह है कि वो यंगस्टर एक टीम की तरह हमेशा कंसिस्टेंटली खेलते रहे, तब वो एक अच्छे कॉम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे. ये ना हो कि आज जिस रमजान में एक टूर्नामेंट खेला फिर मुख्तलिफ जगह चले गए और फिर अगले रमजान दोबारा वही एक टीम बनकर सामने आए. यहाँ पे बहुत अच्छी मिसाल दी और इसी बात की मिसाल है उमर एसोसिएट्स, जिन्होंने तकरीबन एक ही पूल ऑफ प्लेयर्स को थ्रू आउट टूर्नामेंट्स में सेलेक्ट किया है और वो परफॉर्मेंसेस भी देते हुए नजर आ रहे हैं आपको. लेग ग्लांस किया है, बॉल पैड्स पे लग के गई, फाइन लेग के फील्डर के हाथ में. पहला रन तेजी के साथ निकले और दूसरा रन भी यहाँ पे आसानी हासिल कर लेंगे. डगआउट काफी खुश, तो पता है अब सिर्फ चंद ही लम्हात रह गए हैं दूसरी फतह हासिल करने में. और आपने सुना जैसे ही बॉल पैड से लग के पीछे गई तो आमिर ने फौरन ही बोल दिया था कि 2 रन हासिल करने हैं यहाँ पे. अच्छी कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीस टू बैटर्स, शहजाद और वकार के दरमियान. अब से 5 रन सरकार, 51 गेंदों का खेल बाकी. और अच्छी गेंद, काफी उछाल मिला. थ्रो करना चाहते थे बॉलिंग एंड पे, लेकिन स्टंप्स को ना हिट कर पाया खुजैमा. वकार थोड़े से ओवर एक्साइटेड हो गए थे यहाँ. वो चाह रहे थे कि कोई बड़ी हिट लगा के खुद फिनिश करें. एक अच्छा बाउंसर यहाँ अटेम्प्ट किया था, ग्लव्स पे जाके लगा था शहजाद के, और वकार चाहते थे कि यहाँ सिंगल लें और विनिंग शॉट खेलें, लेकिन काफी करीबी मामला हो सकता था अगर बॉल स्टंप्स को डायरेक्ट लगती. अगर हम पॉजिटिव साइंस की बात करें तो सुहेल खान ने थोड़ी अच्छी बैटिंग की थी, थोड़ी रेजिस्टेंस दी थी, लेकिन अगले एंड पे विकेट्स गंवाए जा रहे थे हॉस्पिटल्स. और खुजैमा की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह उन्होंने आके बॉलिंग की है. इस दफा फिर कैप पे निकालने में कामयाब हुए हैं यहाँ शहजाद. थोड़ा सा डिसीव हुए यहाँ स्लोअर गेंद की वजह से, और एक हाथ भी बैट से निकल गया था शॉट खेलते हुए. जी हाँ, बट अब एक बाउंड्री की दूरी पर देखना है कि क्या वकार बाउंड्री लेकर इसी गेंद पर फिनिश कर पाएंगे या अगले ओवर तक ये मैच जाएगा. बहरहाल अगर 8 ओवर पहले मैच जीतती है तरीन एकेडमी की टीम तो ऑफ कोर्स उनका नेट रन रेट आसमानों तक होगा. फाइन खेलना चाह रहे थे, सिर्फ एक ही रन यहाँ हासिल करके. नेट रन रेट की अगर आप बात करें तो पिछला मैच उन्होंने 4 ओवर्स के दौरान ही जीत लिया था, तो नेट रन रेट तो आसमानों से भी ऊंची बातें कर रहा है यहाँ पे तरीन एकेडमी की, क्योंकि अब 12 ओवर से इख्तिताम पे 96, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे, सिर्फ 3 रन की दूरी पे है यहाँ पे अपनी दूसरी फतह हासिल करने से. अगर एओ हॉस्पिटल्स की हम बात करें तो ऑल्दो लोअर टारगेट था, लेकिन फील्डर्स अगर चाहते तो थोड़ी जान लगा सकते थे, थोड़ा प्रेशर में लेके आ सकते थे, सिंगल्स रोक सकते थे, रन आउट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हमने देखा सिर्फ सुहेल खान विकेट के पीछे थोड़ा एंथुसियास्टिक नजर आए. इस दफा कदमों का इस्तेमाल सीधा उठा के खेले हैं, चौके के साथ मैच का इख्तिताम करेंगे यहाँ पे वकार.
और इसी तरह अपनी बढ़तरी दिखाते हुए तरीन एकेडमी सिर्फ 12.1 ओवर में यहाँ हतफ हासिल करने में कामयाब हुए हैं और एक और शानदार फतह मिली है यहाँ पे तरीन एकेडमी को। और इसके साथ 2 wins in 2 games for Tareen Academy. Showing their dominance with the ball, showing their dominance with the bat. Tareen Academy winning this game again by 9 wickets with so many overs to spare. Once again, their top order was lethal. AO Hospital has absolutely no answer when the openers came out and started the onslaught. Something for the other teams to learn as well. Just take the pitch out of the equation. Go with your mindset. Go with the aggression. Batting power play is there to be taken runs on. But if you're going to play defensive cricket, it's not going to be easy for you to come back during the middle stages or the latter stages of the game. Khalid Latif won't be happy tonight. Both the sides shaking their hands. Wonderful gesture being shown by the two participating teams in this match. This match number 8 of Maple Leaf HD Putty 8 Corporate T20 Cup. और अपनी टीम के साथ अली खान भी मौजूद हैं। जिस तरह दोनों मैचेस में, इनफैक्ट अब दोनों ग्रुप के 2 मैचेस हर टीम खेल चुकी है। अब तक हम तमाम टीमों का तज्जिया करें तो सबसे मजबूत टीम तरीन एकेडमी की ही लग रही है, जिसने दोनों मैचेस अपने कन्विंसिंगली जीते। ये हाइलाइट्स। इस तरह शहजाद और आमिर ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया था और तकरीबन सारे ही बॉलर्स को आड़े हाथों लिया था बैटिंग मुकाबले में। ये बेहतरीन एक शॉट खेला था यहाँ पे शहजाद ने, एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल के यहाँ पे छक्का लगाने में कामयाब हुए थे। हालांकि खुजैमा पहली विकेट लेने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद कोई भी बॉलर नुकसान नहीं दे सका यहाँ पे तरीन एकेडमी को। शहजाद की जितनी तारीफ की जाए कम है। बैटिंग पावर प्ले में भी अच्छा आगाज प्रोवाइड किया और उसके बाद फील्डिंग डिसीजंस के बाद भी चौके छक्के लगाए। वकार ने भी काफी अच्छा साथ निभाया और उसी तरह एक और चौका लगा के इनिंग्स का इख्तिताम किया। Not many runs on the board by AO Hospital in the first inning, so it was a relatively easier chase. Amir and Shehzad again providing a good start. Amir going after scoring 29, Shehzad and Waqar then providing the finishing touches. Shehzad being the top scorer yet again for Tareen Academy. 5 bowlers were used, only Khuzaima being the most successful one, picking up the only wicket to fall. So AO Hospital's captain Khalid Latif winning the toss, deciding to bat first. Sohail Khan was the top scorer with 25. Hassan Khan picking up 3 and Faisal and Ali picking up 2 wickets each. And in reply, Tareen Academy just needed 12.1 over to chase down the target for the loss of just 1 wicket. We'll take a short commercial break, and after that we'll be right back with Danish Anis for the post-match presentation ceremony in this match number 8 of Maple Leaf HD Putty 8 Corporate T20 Cup, powered by Parkview City. Don't go anywhere, stay tuned. Got a boundary at the very first ball. Left of the bat, that is close, the finger goes up. He's gonna go past the boundary ropes. Hassan Khan takes it, knocked him over. Chance has been dropped. Regulation chance, and yes, it is. छक्का हो जाएगा. Very good shot by the batsman. Shehzad absolutely punished that. One bounce into the fence. Knocked him over of the very first ball. He has hit that all the way into the dugout. जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप, powered by Parkview City.
7 से 15 अप्रैल DH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। 1983 में भारत का दौरा है पाकिस्तान। नेशनल स्टेडियम कराची, चौथा एक रोजा मैच। भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर का टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला। भारत के मुकर्रर करदा 40 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 197 रन। भारत के क्रिस श्रीकांत 48 रन के साथ नुमाया स्कोरर। पाकिस्तान की जानिब से सरफराज नवाज की 3 जबकि इमरान खान की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 35 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जहीर अब्बास की शानदार सेंचुरी। भारत के बलविंदर सिद्धू की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने यह मैच 8 विकेटों से जीत लिया। Welcome back once again to Moin Khan Cricket Academy DHS Sports Club, जहां हमने एक और माइंड बॉगलिंग परफॉर्मेंस देखी है तरीन अकेडमी की जानिब से। जितनी तारीफ इनके बॉयज की जाए, उनकी मैनेजमेंट की जाए खास तौर पे, वो कम है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और चार शान चीत करती हुए नजर आया आज एओ हॉस्पिटल्स की टीम को। इवेंचुअली दे वन द मैच बाय कन्विंसिंग मार्जिन, डिड इट बाय 9 विकेट्स। नॉट जस्ट दैट, 12वें ओवर में मैच भी खत्म कर दिया। बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस। अगेन जितनी तारीफ की जाए कम है। लेट्स गेट ऑन विद द प्रेजेंटेशन सेरेमनी। प्रेजेंटेशन पार्टी में हमें ज्वाइन किया हुआ है मिस्टर मोहम्मद वसीम ने, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है कर्नल जकर राजानी, हु इज द सेक्रेटरी डीएचएस स्पोर्ट्स क्लब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है मोहम्मद समीत ने, हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैफा न्यूज। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेट्स गेट ऑन विद इट लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा लूजिंग टीम के कैप्टन खालिद लतीफ को। इनकी टीम आज ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई, बट पूरी तरह से आउट क्लास किया इनको आज तरीन अकेडमी में। खालिद, माशाल्लाह से आप इतने सीनियर हो चुके हैं कि हम आपसे जूनियर्स के बारे में और यंग टीम के बारे में बात कर सकते हैं। आपकी टीम की परफॉर्मेंस तो जैसी थी वैसी थी, लेकिन तरीन अकेडमी ने बहुत शानदार खेल पेश किया। बहुत जबरदस्त बैटिंग की इन्होंने, बहुत फील्डिंग जबरदस्त थी और बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। बड़ा डिसिप्लिन था टीम में। देख के लग रहा था कि एक प्रोफेशनल जो अकेडमी और जो है वो खेल रही है, और इनकी जो मैनेजमेंट है जिस तरह नजर आ रहा है बहुत जबरदस्त है। छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं क्रिकेट के गेम में, चाहे लेवल जो भी हो। मैच से पहले आपकी क्या एनर्जी है, मैच के दौरान फील्ड पे आपकी क्या एनर्जी है, आप एक एक रन बचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सारी चीजें सीखने से ताल्लुक रखती हैं और सीखनी चाहिए यंगस्टर्स को भी। बिल्कुल, ये फिटनेस के ऊपर आपके डिपेंड करता है। और जिस तरह की फील्डिंग थी तरीन अकेडमी की और जिस तरह उन्होंने रन बनाए आपके सामने ही है, इसमें कोई चीज कहने की कोई जरूरत नहीं है, दिख रहा है सब कुछ। खालिद, एओ हॉस्पिटल्स की टीम भी किसी लिहाज से कम नहीं है। आप लोग अच्छी क्रिकेट खेलते आए हैं ऑल अराउंड द इयर्स।
आगे की तरफ क्या देख रहे हैं? कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे? सेम स्क्वाड है, इसमें जो एक दो चेंज करने वो करेंगे. हमारे पास अगला मैच है, कोशिश करेंगे उसको जीतें और हम आगे क्वालिफाई करें. Right, ladies and gentlemen, Khalid Latif, thank you so much, sir. I'd like to call upon Sharoon Siraj to come and join us here. बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई शरून को. आज भी हम बैटिंग करते हुए देख नहीं पाए, लेकिन he would be happy because his team did all the hard work. शरून, एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस. पहले बॉल के साथ आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बिल्कुल सेटल होने का मौका नहीं दिया. चाहे हम फैसल अकरम की बात करें, हसान खान की बात करें, आपके सारे पत्ते तुर्क के पत्ते साबित हो रहे हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिल्कुल ऐसा ही है. जब हमारी मीटिंग होती है, मैच से पहले मीटिंग होती है, तो उनको यही बताया जाता है विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है और आपने सिर्फ डॉट्स बॉल की तरफ जाना है. तो यही वो करते हैं और कामयाब होते हैं. इरादे क्या हैं? दूसरी टीमों के मैचेस भी आप देख रहे हैं. कोई ऐसी टीम है जो आपको लगता है आपको टफ कंपटीशन दे सकती है, या हर मैच में आप अपना 100% देंगे? बिल्कुल, हमारा दूसरी टीमों पे नजर नहीं है. हम सिर्फ अपनी टीम पे फोकस करते हैं और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं. शरून सिराज, थैंक यू सो मच सर. इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहें. बहुत शुक्रिया आपका. Let's get on with it, ladies and gentlemen. It's time for the man of the match. There were quite a few contenders as far as the man of the match is concerned. Overall, पूरी टीम को मेरा बस चले तो मैं man of the match award दे दूं. But आज के man of the match है हसान खान, who managed to take 3 wickets for his team. हसान प्लीज आए और हमें ज्वाइन करें. एक और solid performance. Hassan didn't just take 3 wickets for his team. He was superb on the field as well, just like the rest of the 10 players. Hassan, एक बार फिर अच्छी performance आपकी टीम की. आप देखा जाए अगर इस पूरे लॉट को तो थोड़ी सी सीनियरिटी रखते हैं इस टीम में. क्या सोच के जाते हैं पिच पर? बिकॉज इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस के अगले को खेलने का मौका ही नहीं दे रहे आप. जी बिल्कुल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत जैसा आपने कहा कि हमारी टीम एक वेल बैलेंस टीम है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि अपनी बेसिक्स पे हम रहें और जो हमें आता है उसको डिलीवर करने की कोशिश करें और उसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं. आज आपकी पर्सनली परफॉर्मेंस अच्छी रही, 3 विकेटें आपने हासिल की अपने लिए. और क्या स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं आपने हसान इन द नियर फ्यूचर? बस कोशिश यही होती है कि जब भी खेलें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें और अपनी टीम को मतलब मैच विनिंग परफॉर्मेंस करें टीम के लिए, और उस परफॉर्मेंस का ही मजा है जिससे आपकी टीम जीते. तो कोशिश यही है कि जहां भी खेलें परफॉर्म अच्छा करें. Honestly, I just couldn't wait to talk to Hassan. So Hassan, I'll send you back so that you can collect your memento and your cash prize as well. I'd like to request Colonel Zakar Raja to give the memento, and I'd like to request Mr. Mohammed Wasim to hand over the cash prize of 15,000 rupees to Hassan Khan. He deserves the cash prize of 15,000 and that memento as well. The talent that Hassan has, he's going to get many more. Lastly, हम request करेंगे Colonel Zakar Raja से, who is the Secretary DHS Sports Club Moin Khan Academy, to present a club souvenir to Mr. Mohammed Wasim and to Mr. Mohammed Samit as well, the representative of DAFA News. Wasim, thank you so much for bringing such a strong squad to this tournament and working so hard with them. Right, gentlemen, this is about it from the day. We'll have 2 more exciting matches tomorrow. आज के लिए दानिश अनीस और जियो सुपर की टीम को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. Got a boundary on the very first ball. Left of the bat, that is close. The finger goes up. He's going to go past the boundary ropes. Hassan Khan takes it. Knocked him over. Chance has been dropped. Regulation chance, and yes, it is. छक्का हो जाएगा. Very good shot by the batsman. Shahzad absolutely punished that. One bounce into the fence. Knocked him over of the very first ball. He has hit that all the way into the dugout. सत्रह साला मरियम जहरी कराची के इलाके लियारी की रिहायशी हैं और मेडिकल की तालीम हासिल कर रही हैं. पाकिस्तान में जहां क्रिकेट ही हर खास व आम का मकबूल और मनपसंद खेल है, वहां मरियम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फैन है और फुटबॉल की स्ट्राइकर, जबकि फुटसॉल में पिवट यानी फॉरवर्ड की पोजीशन पर खेलती हैं.
फुटबॉल 6 ग्रेड से खेल रही हूँ और बचपन से ही शौक था। दादा के साथ भी टीवी में देखती थी, फुटबॉल देखती थी। फिर स्कूल के टूर्नामेंट्स आते थे तो उसमें ना स्पोर्ट्स टीचर ने मेरी इंट्रोड्यूस कराया मिस सादिया से। फिर इंटर स्कूल खेले, इंटर क्लब खेले। फिर मिस सादिया ने अपॉर्चुनिटी दी चाइना की, गोतिया कप खेला वहाँ पर। अभी PFF बैन हो गया था 5 साल से। ये लास्ट टूर था हमारा मंगोलिया और भूटान का, तो बैन हो गया था वो। तो इस वजह से हमने फुटबॉल से फुटसॉल की तरफ हमने ट्रांसफ़र कर लिया। और मैं समझती हूँ फुटबॉल से ज़्यादा फुटसॉल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें पासिंग और बहुत अच्छी होती है, मतलब तेज़ गेम होता है फुटबॉल से। क्रिकेट नहीं अच्छा लगता था शुरू से। मैं देखती थी ना, मैंने आपको बताया, दादा के साथ देखती थी मैं फुटबॉल के गेम्स। और फिर मुझे रोनाल्डो बहुत पसंद है, तो उसकी गेम देख देख के और मुझे वो हुआ कि मैं खेलूं। रोनाल्डो का कवर भी है मेरे पास, वॉलपेपर भी रोनाल्डो का है। चलो मरियम, गुड शॉट, गुड कीपर, कीप प्लेइंग, कीप प्लेइंग। बेसिकली हमारी फैमिली जो है ना ज़्यादातर स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा अटैच रही है। बचपन में हम छोटे होते थे तो हमारे घर में हमारे वालिद साहब ज़्यादा हमें जो है पुश करते थे स्पोर्ट के हवाले से, कि वो हॉकी के मैचेस हो गए, उस वक्त जो है बड़े अच्छी हॉकी हुआ करती थी पाकिस्तान में। इसके बाद जो है फुटबॉल वगैरह जो वर्ल्ड कप आते थे ज़्यादातर, तो वो देखा करें। तो ये छोटी सी थी मरियम ज़ेरी, तो अब्बू के साथ बैठी होती थी और फेवरेट होती थी उस वक्त इसकी ब्राज़ील, वो सबकी होती थी, लेकिन मैं वो कुछ ज़्यादा ही इसका इंटरेस्ट था उसमें। मम्मा चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, और मुझे तो फुटबॉल में भी है। तो मैंने आपको बताया ना कि भूटान में मैं गई थी, तो मैं वहाँ पे अपनी कॉपी साथ लेके गई थी, और मेरे बोर्ड के पेपर्स थे, मैं प्रैक्टिस भी करती थी और फिर आके पढ़ाई भी करती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस करने में बहुत मुश्किल हुआ था। जब ये चाइना जा रही थी उस वक्त ये बहुत छोटी थी, तो हमारे बहुत ऐसे रिलेटिव है जो हमें कह रहे थे कि नहीं, आप बच्ची का कैसे भरोसा कर सकते हो, आप उनको इतनी दूर भेज रहे हो। मैंने कहा कि ठीक है ना, अगर उसका शौक है, उसका पैशन है, तो हम इससे और कुछ नहीं मना कर सकते। इसलिए हमने इसको ज़्यादा खेलने दिया, इसके साथ सपोर्ट किया। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि लड़की है, क्यों खिला रहे हो, इसको नहीं खिलाओ, लड़कों को खिलाओ, ज्यादा लड़कों, पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं बहुत मोटिवेट करते हैं। जब लड़की का कोई ऐसा मामला आता है स्पोर्ट के थ्रू, या तो लोग कहते हैं कि यार बच्ची है, हाथ पैर टूट गए, शादी ब्याह भी करनी है, बड़ी होगी। लेकिन मैंने अपनी बच्ची पे जो है पूरा कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि उसको लड़कों की तरह रखा है मैंने। फादर मेरे बहुत सपोर्टिव है। अगर मतलब मेरा रिक्शा अगर मिस हो जाता था ना, लेट हो जाती थी या कुछ, तो फिर मेरे फादर ही मुझे बाइक पे फिर मुझे प्रैक्टिस पे छोड़ने जाते थे। फुटबॉल का स्कोप तो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है। अब एक ही ऑप्शन रह गया फुटसॉल का, जो कि मिस सादिया ने कोलैबोरेशन की है पेरिस से। तो इंशाल्लाह इंटरनेशनली हम पेरिस में खेलेंगे फुटसॉल, लेकिन फुटबॉल तो ख़त्म हो गया है पाकिस्तान में लड़कियों के लिए। मेरी ख्वाहिश पहले तो डॉक्टर भी बनना है मुझे, और दूसरा मुझे इंटरनेशनली खेलना है बाहर, और खेलना है। भूटान और मंगोलिया तो अब खेल लिया, लेकिन और इंटरनेशनली मुझे खेलना है, रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को। Let's practice. Stay where you are. Stay where you are. Come on, what is the most important? Side bend.
Yeah, side. Okay, good. Just side. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये काम कोचेस का है, मगर मैं सिर्फ अपनी बेटी को हेल्प कर रही थी, प्रेप कर रही थी एक मैच के लिए। एंड गेस व्हाट, फुटबॉल नहीं, फुटसॉल, दैट्स राइट। आई नो हमने पास्ट में फुटसॉल को सुना और मे बी इग्नोर कर दिया, नोइंग के हाँ फुटसॉल कौन देखेगा, मगर व्हाई नॉट। फुटसॉल इतना एक पॉपुलर और फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा पैदा हो गया। तो हम लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो फुटसॉल के लिए कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी कंसंट्रेशन की जरूरत है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले भी देखा, जो मरियम है वो फुटसॉल प्लेयर है, मीठाधर लियारी से उनका ताल्लुक है। किस तरह फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, सिर्फ उनके वालिद ही, उनकी वालदा भी कहाँ से वो दूर से आती हैं ट्रेनिंग के लिए, अपनी चादर पहनती हैं, अपनी किट पहनती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। और नॉट ओनली दैट, वो एक माइंडसेट को भी चैलेंज कर रही है, जो कह रहे हैं कि फुटबॉल या फुटसॉल सिर्फ जो गेम है मर्दों के लिए होता है। इट्स नॉट, एनीवन कैन प्ले, इतना अफोर्डेबल भी तो है। एंड यू नो, ये जो माइंडसेट है इसको चैलेंज कर रही है बहुत सारी लड़कियां पाकिस्तान में। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, बट हमारे बहुत सारे राइजिंग स्टार्स आ गए हैं फुटसॉल में। हाउ डिड इट चेंज? वेल, 2021 में फीफा बैन लगने के बाद बहुत से फुटबॉल के जो एस्पायरिंग प्लेयर्स हैं या जो दीवाने हैं फुटबॉल के, उनका रुझान जो है वो फुटसॉल की तरफ आ गया। और यू नो क्यों ना आए, आपको पता है, लाइक फुटबॉल के जो बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, जैसे रोनाल्डो है, मेसी है, नेमार है, एनिएस्टा है, ये लोग सब फुटसॉल को प्रमोट करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि रोनाल्डो का कहना है कि अगर फुटसॉल नहीं होता वो इतने बड़े प्लेयर नहीं होते। इफ यू वांट टू बी अ गुड फुटबॉलर, फुटसॉल खेलना इन अ वे जरूरी हो गया। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो फुटबॉल बैन के बाद से बहुत सारे फुटसॉल हम देख रहे हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और आई थिंक इसी के बाद हमारा बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ टू फाइंड आउट What is futsal? So let's go and find out कि futsal आखिर है क्या। फुटसॉल को अगर फुटबॉल का टेप बॉल वर्जन या फिर T20 वर्जन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके बुनियादी कवानीन तो फुटबॉल जैसे ही हैं, लेकिन फुटबॉल और फुटसॉल में खासा फर्क है। जितने भी लोग हैं जिनके पास टाइम कम होता है वो फुटसॉल को ज्यादा तरजीह देते हैं खेलने के लिए, इस वजह से क्योंकि 20 मिनट्स का हाफ होता है, ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर बंदा अच्छी इंटरटेनमेंट के साथ घर चला जाता है। 5 साइड ईच प्लेयर होते हैं दोनों साइड के ऊपर, क्विक टचेस का गेम है, टेक्निक का इसके अंदर फुटबॉल के मुकाबले में थोड़ा सा टेक्निक का जो है वो चेंजेस है इसके अंदर। अगर आप बाहर के जितने प्लेयर्स को देखें वो पहले फुटसॉल खेलते थे, जब भी देयर टाइमिंग, their agility and technical aspect of the sports is terrific. जितने प्लेयर आपके रोनाल्डिनो हो गए, रोनाल्डो हो गए, काका हो गए, आप ब्राजील को, पैराग्वे इनको उठाएं, उनका पहला स्पोर्ट ही फुटसॉल होता है। फुटसॉल खेलने के लिए फुटबॉल की तरह वसीओ अरीज ग्राउंड दरकार नहीं होता। किसी बास्केटबॉल कोर्ट की तरह एक आम फुटसॉल कोर्ट 125 से 138 फुट लंबा और 66 से 82 फुट चौड़ा होता है। टचेस बहुत है। द मोर द चाइल्ड टचेस द बॉल, टेक्निकली वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको सबसे बड़ी फुटबॉल में बेसिक चीज है 2 टच 1 टच। जितना परफेक्शनेस आपको फुटसॉल इस चीज में बनाती है, फुटबॉल नहीं बनाता। फुटसॉल की छोटे साइज की कम बाउंस होने वाली बॉल और छोटा कोर्ट इस स्पोर्ट्स को फुटबॉल के मुकाबले में ज्यादा तेज और सनसनीखेज बनाता है। एक्चुअल बॉल आपको खेला उस बॉल से जाएगा नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो बस 2 मीटर ग्राउंड से उठे, उससे ज्यादा उठी वो नापते, बॉल नॉट गुड। फ्रीक्वेंट इसके अंदर जो 10 प्लेयर होते हैं टोटल टीम के अंदर, उनके अंदर चेंजेस इनके अंदर है, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का गेम होता है जिसकी वजह से रोलिंग सब्स्टिट्यूशन रखी जाती है और इतना हाई पेस में ये गेम होता है और इसकी जो टेक्निक है वो टोटल डिफरेंट है।
फुटसल का आगाज 1930 में यूरुग्वे से हुआ। ये उन दिनों की बात है जब यूरुग्वे ने वर्ल्ड कप जीता, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किए। ऐसे में इस खेल को नौजवानों में मजीद मकबूल बनाने के लिए युआन कार्लोस सिरियानी नामी एक टीचर ने इंडोर फुटबॉल को मुतारिफ कराया। इस खेल का आगाज हुआ तो इसके कवानीन मुख्तलिफ खेलों से लिए गए, जैसे खेल के बुनियादी उसूल फुटबॉल से लिए गए। खिलाड़ियों की तादाद जो कि हर टीम में 5 होती है और एक मैच का 40 मिनट का दौरानिया बास्केटबॉल से लिया गया। गोलकीपर के कवानीन वाटर पोलो और गोल और फील्ड का साइज हैंडबॉल से मुतासिर होकर लिया गया। Futsal is a combination of futsal, basketball, handball, chess. Chess? Yes. Why? It's all over here. आपने कैसे बॉल को करना और किक करना है, कैसे आपने उसको अपना मूवमेंट बनाना है, ये 4 गेमों का वो है। उसका निचोड़ डाल दिया। निचोड़ है। Yes. बास्केटबॉल अगर आप देखें तो 5 आगे जाते हैं, 5 पीछे आते हैं। इसमें 4 आपके आगे पीछे आएंगे। एक भी, मैंने जैसे पहले रिपीट किया, एक भी थोड़ा सा ढीला प्लेयर होगा, यू विल लूज द मैच। फुटसॉल और फुटबॉल में सबसे बड़ा फर्क यह है कि फुटसॉल हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, तहम फुटसॉल किसी बीच पर, टर्फ पर, किसी पार्क में, यहाँ तक कि सड़क पर भी खेला जा सकता है। It is played on cement, wood, synthetic surf, and turf. मेरा क्लब हम लोग सबसे पहले फुटसॉल पे एम्फेसाइज करते हैं और यकीन माने जो बच्चों को फुटसॉल सिखाया जाता है उनका फुटबॉल में रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है। हम सिखा ही रहे हैं अब फुटसॉल। फुटबॉल के अक्सर शायकीन ऐसे भी होते हैं जो नहीं पसंद करते कि वो 90 मिनट तवील खेल देखें और इसमें कोई गोल ना हो। फुटसॉल के मुकाबले में ऐसी उलझन नहीं, क्योंकि किसी बास्केटबॉल के मैच की तरह फुटसॉल में भी बाजी पलक झपकते ही पलट जाती है। राइट, सो डिड यू गेट इट? डोंट वरी, हम लोग और भी बहुत सारे डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे कि फुटसॉल या फुटसैल किस तरह खेला जाता है। वैसे पॉपुलरली हर कोई फुटसॉल ही कहता है, मगर असली में इसको प्रोनाउंस हम फुटसैल ही करते हैं। बट क्योंकि अब सब फुटसॉल बोलते हैं तो हम भी फुटसॉल ही बोलेंगे। बट ये तो हमने जस्ट मालूम की कि व्हाट इज फुटसॉल। एंड आई थिंक पॉइंट टू रिमेंबर इज कि फुटसॉल जो है आप एक्चुअली रियली कहीं भी खेल सकते हैं। एक फुटबॉल ग्राउंड में 4 फुटसॉल मैचेस हो सकते हैं एंड ऑल यू नीड इज 5 प्लेयर्स एंड यू कैन प्ले दिस गेम। तो ये एक जबरदस्त चीज है फुटसॉल की। बट ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप इन माइंड रूल्स एंड रेगुलेशन, इस पे हम लोग नजर डालेंगे, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे विद अस। मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस है, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा, कि इस प्राइड को जो डैमेज करे उसको दोबारा ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी, तो आप पे फोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब? कभी नहीं। जनरल साहब कभी नहीं। आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं। यार बड़ा अफसोस हुआ। आप कभी नहीं। हमने पास्ट में कोई एग्जाम्पल सेट की ही नहीं है। जो मैं बात हमेशा से करता रहा हूँ कि हमने पास्ट में, पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, तो ये चीजें होती रहेंगी। दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ और नाम नहीं है था तो फिर तो जाहिर बात है हर बंदा डिसअपॉइंट होता है, चाहे मैं हो कोई भी हो। जब वो उम्मीद रखता है और वो पूरा नहीं होता तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी।